मार्च 8 रे कहूचु आज आम दिवस कंठ खोली चित्कार करूचु आज आम दिवस मोर सांग माने पचारुथिले हाँ ताले तो खाली आमर किछि नाही भाई तमे तो 10,000 वर्ष आमर करी नहीं चोरे गोटे दिन हमको दबनी गोटे दिन मो मन खोली कहबिनी मु कौन भल पाए गोटे दिन मधुलिका मैडम को कहबिनी मैडम अपन वर्ष तमाम काम करूचंती आसंतु आमे अपन को आज सम्मान करूचु आसंतु जोगमया मैडम आसंतु पुष्पिता मैडम आसंतु भाग्यवती नानी आस लिप्सा आसंतु सुमना मैडम आज आमे अपन को सम्मान जनाउचु आसंतु इति मैडम चौक धरी केते मैथमेटिक्स पढ़ाई आसंतु आज आमे अपन को प्रशंसा करिबु आसंतु झरणा मैडम संभाली संभाली केते संभाली चंती हॉस्टेल द सुख दुख नै चंती आसंतु एही न जणौ आमे अपन को भल पाऊ अरे तरकारी दे भल लगिले स्वामी जेते बेले कहंती आज किए करछि कि तरकारीटा बढ़िया आइछि तो मनटा खाली कुतु कुतु हे जाउ थाए आ कहबा पाई आ मु करछि बोली किंतु मु कहे ए झुन्नू करिसंती बा ए मिन्नू करिसंती बा ए सीए करिसंती बा ए सीए करिसंती बा कारण मु करिछि कहिले प्रशंसा सेठु मिलिबो नाही प्रशंसा कले माने मुंडरे चढ़ीबे ना रे पदुटी मीठा कथा पदुटी खुशीर कथा पदुटी प्रशंसार कथा चलो आज आमे रानी दीदी को ऊपर ढाली दबा रानी जी ए तमाम कॉलेज को सफा रखुचंती बोली तो आज आमे पाठ पढ़िबा को क्लासरूम जाउचे आज आमे टॉयलेट जाउचे चलो ए छोटा छोटा जिनिस करबा हमर टंका सोना रूपा बड़ बैंक बैलेंस विराट बड़ गाड़ी किछि दरकार नाही रे मु परा मां मु परा 10 मास गर्भ रे रखुची संतान को मु परा जन्म दउची ए सृष्टि को मु कोन मान अपमान धरे मु धरे ना किंतु मां भी तो मनुष्यटी चलो आम घर मां को आज कपे चा किए दबारे वर्तमान आमे पिला माने आज एही दिवस पालन कला बेले आमे गोटे एकेडमिक इंस्टीट्यूट रे पालन करूचो ए सब कहिला बेले किंतु मो गोटे जिंस मध्ये कहबा पई चाहिबी भारत वर्ष रे नारी स्वाधीनता थिला एहा नुए नथिला जदि नथांता ताहले कोन स्वयंवर हेई थांता कि ना भापनी इमेजिन करो कम टाइम ता सब पुओ माने एते बसिथिबे आ तांको गुरो गुडा को हाउथबो आ आमे जा को इच्छा ताको चूज करिवो बाहाबो बोली केते मजा होता नै रे स्वयंवर थिला तार अर्थ होउची आम इतिहास रे आम संस्कृति रे आम परंपरा रे नारी को सेही स्वाधीनता दिया जाइथिला किंतु सेही स्वाधीनता रे पुणी तो सेही नारी को अर्जुन जीतिथिला बेले 5 जनक भितरे पुणी भागकारी कर दिया गला सेहीटु खंडित हला नारी स्वाधीनता सेही नारी को ताहले पसा खेल रे दुती क्रीडा रे काहे की बाजी रखि दिया गला सेहीटु खंडित हला नारी स्वाधीनता हेले सेही नारी जेउ दिन तार केश स्पर्श कला दुशासन सेही दिन से कहिथिला हे मोर केश को मु मुकुड़ा रखिली जेउ दिन द्रौपदी रा एही केश को स्पर्श करे दिबा अवस्था खंडित हबा सेही दिन मु केश को बांधी दउची बर्तन मोर मीटिंग आरंभ हो एहा कहिबार अर्थ मो पुणी एठी कहिबी नारीर मान सम्मान रक्षा करिबा पाई से दिन किंतु भीम जड़े कागई आस्तिले मो चाहिए मो निजर सम्मान ताको रक्षा करिबा पाई असमर्थ हेबी जदि मो सहित मोर स्वामी नथिबे राखी बांधिबा पाई भाईटीर हाथ नथिबो बापा डाकिबा पाई ससुर नथिबे तेणु मोर बापा मोर भाई मोर स्वामी मोर ससुर को नहीं कि मो नारी नारी सशक्तिकरण अर्थ नुह कि मो पूरा पुरुष समाज को निंदनीय करिबी
ना सेही होची नारी जे पुरुष को वास्तव में सम्मान प्रदर्शन करि पारे सहजगर हाथ बढ़ाई पारे जदि द्रौपदी केही भी सम्मान रक्षा करिसंती से होचंती भीम किंतु एहार माने नुह कि मते केही निर्जन रास्ता रे पदटे कमेंट मारी के देखो आज्ञा पदटे कमेंट मारी के देखो मो सामना रे मोर को झियो को जीए भी हो से भवानीपाटना मां मानिकेश्वरी विश्वविद्यालय हो किंबा रास्ता रे जाउथबा अन्य केही मु केबे बर्दाश्त करिबि नाही कि मो सामना रे आउ गोटे काहा को एहा पुआ और झियो निर्विशेष रे एहा नुहे कि पुआ मान को कमेंट मरा होनी पुआ मान को भी बहुत कमेंट मरा हो जीए दुर्बल मोर कहिबार अर्थ जेंडर रे कमे जीवाने जीए दुर्बल ताको हमें शक्ति प्रदान करवा कहीं कि ना मो नारी मो विद्यादायिनी मो सरस्वती मो धनदायिनी मो लक्ष्मी मो कलासुरी भयंकरी मो महालक्ष्मी मो महासरस्वती मो महारुद्राणी मो काली मो दुर्गा मो चंडी मो कहार अपमान को क्षमा देवी नहीं मो सामना रे घटुवा अत्याचार को मो केबे हेले क्षमा करिबि नहीं से होची नारी चलो आज गोटे दिन आम निज पई बंचिबा किंतु एठी गोटे किंतु अच्छे भारतीय प्राच्य सभ्यता नारी को दिया जाइथिबा स्वाधीनता रे अभ्यस्त नुहे सेठी पाई किछि नारी स्वाधीनता नाम रे उच्छृंखलता करते सही उच्छृंखलता जोगु आज समाज विपन्न समाज रे स्थिरता सेतेबेले आसीबो जेतेबेले पुरुष एवं नारी उभय निजर सीमा प्रति सतर्क रहिबे आमे स्वाधीन आमको आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 कहूची भारतीय संविधान आमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रो स्वाधीनता देइची आमे सब कहि परिबा आमे सब पिंधि परिबा आमे सब वाले जाई परिबा किंतु मो एठी प्रश्न रखिबी आम झियो मानक भितरे टिके क्षोभ थाए कि पुओ मानकर हॉस्टेल टा 9टा पर्यंत खोला रहउची 7टा पर्यंत 8टा पर्यंत 9टा पर्यंत हमको 6टा ही गले जल्दी आसो 6टा लोग ताला पके दउचले यार करना वुमेन्स डे करछुदी नारी स्वाधीनता हां एटा ही ठीक ताली मारिबा पूर्व किए मो कहि दे तुम पिता माता तुम बापा मां हमको समर्पी देइछंती तुम मानको कि आमे तुमको 3 वर्ष पाई झियोटी को देई देलु जेमिति देइछु मोर लहुणी पितळा झियो सेमिति फेरेइबो जेतबेले तुमे घर बाहर पाद दियो केते मनुष्य रूपी राक्षस भेड़िया सुगार रास्ता रे बुलु थांती कारण नारी केवल नारी नुहे नारी मध्य देहटिए से देह को झुणी खाइबा पाई एही नर रूपी सुगार माने बुलु थांती तुमे कुह तमे तो छुटिया शिशु आज प्रजापति टिए तुमे जदि सेही मानकर पाशविकतार शिकार हुआ एति पाई दायी रहिबो किए जेतेबेले एई गोटिए प्रश्न मो हॉस्टेल रे रहुतबा झियो मानक पाई छाड़ीबी सेही पाई तुमर सुरक्षा पाई फुलवली पड़िला शेष करी हॉस्टेल रे रहुतबा झियो माने स्वागत जणाइबा हमर डॉक्टर जयदेव साहू सार को वर्तमान मो कहउतली कि हम बेकर एमिति जने आसी पहुंची जिबे जे नारी स्वाधीनतार कथा केवल कहंती नाही नारी सशक्तिकरण कथा केवल कहंती नाही वास्तव में नारी मानक पाई नारी मानक द्वारा नारी मानक पाई ठिया आइतबा हमर अति प्रिय मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सार वर्तमान प्रतिभा प्रचलन करबा पाई हमर दुर्गा को
मो अनुरोध करबी सारा टाइम तालीले जेमिति बहुत जोर सुबिबो Symposium on role of women for Viksit Bharat एही सिम्पोसियम रे एकाठी होइचे अनुरोध करबी जो विभाग रो सार माने आसिनांती मैडम माने आसिनांती वर्तमान आसी उपस्थित हेबे हमर कार्यक्रम आगो जीव ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम अल्प समय रे आम सहित उपस्थित हेबे Major Dr. Jaydev Sahu sir, HOD Department of Register of this Maheshwari Vishwavidyalaya mo निमंत्रण जणैबी सर को अनुरोध मां वाग्देवी सरस्वती आज विकसित भारत यही उद्देश्य रे अनुरोध करिबी सार को मंचासीन हेबे अनुरोध करिबी ऑनलाइन रो लिंक समस्त सहित शेयर करा जाऊ आम सहित मीडिया पार्टनर AKN न्यूज आसी उपस्थित होइचंती सेति पई मो बहुत बहुत धन्यवाद जणैबी मैडम को आमे ऑनलाइन रे वर्तमान मैडम जॉइन करिवे तापर किछि समय परे आम सहित उपस्थित हेबे बहुत बहुत स्वागत जणाउची समस्त को हम गाइबे कि ऑनलाइन वेलकम कार्य व्यस्तता हेतु आमर अति प्रिय ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम अल्प समय भितर उपस्थित हेबे मो अनुरोध करिबी आमर स्वागत संगीत परिवेषण करबा पई लिप्सा टीम को नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा सागर को लंघी जाए आकाश को छुई जाए सागर को लंघी जाए आकाश को छुई जाए दे जाए ठीक पृथ्वी सीमा नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा एक क्षेत्र कहे नारी प्रियंवदा एक क्षेत्र कहे नारी पूज्यस्पदा एक क्षेत्र कहे नारी महनिया एक क्षेत्र कहे नारी बंदनिया हो नारी जातिर गुण गौरव नारी जातिर गुण गौरव विश्व कहे नारी चिर बंदिता नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा
ए देश माटी सर्वगुण नारी सम्मिलन एठी एडे महियान ए देश माटी सर्वगुण नारी सम्मिलन एठी अर्धसेनी एठी माउसी स्वरूपा माणिकेश्वरी माँ महाविश्वरूपा अर्धसेनी एठी माउसी स्वरूपा माणिकेश्वरी माँ महाविश्वरूपा लंकेश्वरी समले शक्ति स्वरूपा चौदिगे रही चंती नारी महाशक्ति ए देश विराजित स्नेह शांति प्रीति नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा नारी शक्ति महिमा नारी कृति महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद आमर छुआ मानकु सुंदर भाबरे स्वागत संगीत परिवेशन कले। Our heartiest welcome to all the madams who have joined online. Now I will request Sarita ma'am for the guest of honor first, for the introduction of guest of honor Annapurna ma'am. Namaste. Good morning to everyone. Happy International Women's Day to all of you. Honorable Chair of this session, Honorable Vice Chancellor, Dr. Nivita Nath ma'am, our esteemed Deputy Registrar, Major Jagdeep Sahu sir, Dr. Paulisri ma'am, Dr. Jhana Rani Thangamajhi ma'am, Itishri Raut ma'am, Miss Rosemary Eka ma'am, Dr. Madhulika ma'am, Dr. Shomana ma'am, and all the dear faculty members and my dear students. Really, it's a great moment for us. It's really a historic moment. For the first time in our university, we are celebrating this occasion in such a grand way. So definitely it's an opportunity to recognize the resilience, the strength and the achievements of women all around the globe. So definitely today we are having two esteemed speakers with us. So first let me introduce Professor Annapurna Devi Pandey ma'am. Professor Pandey teach cultural anthropology at the University of California, San Cruz. Professor Pandey holds a PhD in sociology from Jawaharlal Nehru University, New Delhi, and was a postdoctoral fellow in social anthropology at Cambridge, United Kingdom. Her current research interests are diaspora studies, South Asian religion, and immigrant women's identity making in the diaspora in California. She is the author of numerous essays and a few books on Indian women's activism, agency, entrepreneurship, and employment in India and the Indian diaspora. Professor Pandey recently completed a senior Fulbright US scholarship working in India. She is an accomplished filmmaker, homeland in the art, the meat of Buddha's birthplace, with Professor James Freeman, and Road to Pune. Her more recent film, Road to Pune, has already been nominated to 9 international film festivals in 2018 and has received several national and international awards. Really, ma'am, thank you so much, ma'am. It's a great opportunity and privilege for us to have you with us. Thank you, ma'am. So now it's over to you. May I request Annapurna ma'am to start her speech? Hello, good morning. Can you all hear me? Yeah, you are audible, ma'am. Good morning. Very good morning and welcome to this session. Yeah, good morning and good evening because based on where I am, it's almost 10:30 p.m. I am in California. I'm about how many, maybe 13 hours behind you. So because that's why it is still 7th of March
and about 10:30 p.m. But it is such a, I would say, such an honor and pleasure to be with you all. First of all, happy International Women's Day. And the reason why I agreed to come and just to be with you all, because I love your campus and I love you all, I must say. I had been, I was with you all last year, like that, it was 2 years already, 2 years, I can't believe. So, first of all, thank you again for your great introduction. And it's wonderful to meet Professor Sefali Jha, who is with us. And I want to thank our acting Vice Chancellor, Dr. Manikya, and also the wonderful friends I see here, the pictures, and also I see the amazing group of people sitting there in the audience. So I must say that it's a great honor and pleasure to be with you all. Can you all hear me? Yes. Yes, yes, Can ma'am. you all hear me? Yes, yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, thank you, Manikya. So, first of all, that it's amazing that you all are celebrating International Women's Day. I must say that every day is the Women's Day, because every day must be celebrated as the Women's Day. Why? Here I am not just saying because I'm a woman, and I also I wear many hats, being a daughter, sister, wife, mother, and also a teacher, a friend, companion, so many, and also a cultural therapist. It's not because that that I want to make women exclusive, because it has already been declared and it has been realized that women's rights are human rights. So, because as we all know, that if a woman is empowered, it is empowering the family, the community, and the society. And you all are the learning examples. Think about it, the faculty, the students, the amazing community. So I must say that let's just congratulate ourselves that in celebrating International Women's Day, we are celebrating ourselves and our community. That I would emphasize. Just a little bit, because about why I'm interested in coming to you. I very proudly I say I'm an Oriya, and I also am from Odisha, and I spent my formative years as a student at secondary board high school in Qatar, and I taught at Ravancha College, now university, and before coming to the United States about 35 years ago. It's been it feels like a long time. I realized that it's that God is, having spent now 35 years in the Western world, teaching about women and teaching about women's rights, women's life experience, and women's achievements. I must say that I realize that my heritage, my tradition, my own cultural identity has made me who I am. Because I must say, first of all, that as growing up in a non-Western society in Odisha, India, I have realized that I have the opportunity to compare the Western world and the non-Western society. I realize that you all are very privileged, very lucky, that we have the role models of all these the achievers, women achievers.
starting with, I would say, our mothers and our kind of definitely our grandmothers. And the whole, if we just look at our heritage, the goddesses, also the powerful women as the grandmothers, the kind of the village goddesses, the yoginis, the dakinis. If you think of, just look at the women who have really given a sense of identity, a sense of protection, a sense of security, and which has really defined our society as kind of definitely strong. But I want to emphasize that if we just look at the binary, at the men and women category, that which is the popular binary followed in the Western world, that masculine and feminine. And masculine is tied to that the kind of the mind, and feminine is tied to the body. So if we just look at this kind of the binary, there is no room left for any other identity. That kind of that is masculine and feminine. But growing up in the non-Western world in India, I can compare it with many societies, whether it is in Southeast Asia, whether it is Middle East, or it's kind of that the Islamic societies, and even Jewish and Christian societies, that we realize that we should not forget the androgynous nature of the divine, that it is not just masculine or feminine, it is when we talk about women here referring to both a complementarity between masculine and feminine. Celebrating the Women's Day is, that's why I always emphasize, celebrating that complementarity, celebrating the collaboration, and celebrating the whole is a kind of the woman's whole, which is not devoid of the masculine, the manhood. So I'm emphasizing on an inclusive nature of womanhood, that women cannot be constructed without the kind of the masculine, and we must realize the complementarity. So this is a reminder to our society that let's not just kind of think about that, okay, celebrate the Women's Day and tomorrow, or just the next moment, just treat our women badly. In the sense that look at the kind of now in 2025, we realize that all over the world, what the Beijing conference had achieved, the International Women's Day, International Women's Decade, 1975. But now we realize maybe it's time to kind of evaluate. It's time to see how we can progress, how we can go forward. That when I look at that kind of that more and more in the Western world in America, here there is so much of emphasis now that when you talk about that women, that also kind of, I always say that now the education, in terms of education, the gap between men and women has been closed. Women are on par. But when it comes to employment, kind of an opportunity, working in the corporate world, we see the gap. But more and more the governments of the society is becoming more conservative. Conservative in the sense controlling, constricting, restricting the women. So we see that happening in the United States, and we see that all over. Just to give you one example, I was in India. I participated in Kumbh Mela. I was there January 29, and I heard that it was kind of about 35 to 40 million people during the millennium last year. And I heard a kind of a sermon going on, on the mic that people were under control. So I was so shocked that I said, oh my goodness, here we are, and millions of people
and mostly that women actually had to experience a sense of spirituality and a sense of that determination, the commitment, the sense of community, families, taking it at the back, in the Ganges, or in the Chile, but this, that kind of the 21st century here, that keep on living. And we need to think about where it is coming from. This is coming from kind of the lack of language. We are not acknowledging our own rights. This is very important to think about. What is our heritage? What is our tradition? Who are our kind of role models? We can identify with, we can relate to. So I must emphasize that going now in the Western world, that I realize that I'm very, very proud of our own tradition, our own heritage. I always realize that it is so important to think about that, to become the goddess, to think about that kind of how we can to become, not just to kind of ask for useful treatment. That means that the role model is from within. We can think about that, yes, we can do whatever we want. That's kind of it. So that brings me to the point that all these young women are there, and although I see the faculty, the sense of the community, and I must say, what does it really celebrate international unity? What do we mean? Let's look at the history a little bit. We know that much before women in India achieved the voting right along with India's independence, we see that in America, it's kind of the women got the right to vote in 1919. That's kind of much before, and women really worked very hard for it. That if we just read the kind of the feminist movement, women worked extremely hard, and I simply could not believe that when reading the kind of the feminist history, the feminist movement, that it was, that the working class women. The women who were working in the factories were women who were literally garment workers. The women who realized that they were not getting their dues. They were controlled, they could not even get their 75 hours at kind of a week. They would be working, but they were not paid well, they were not in their wage, they were discriminated against at work. So it was the kind of working class that started this movement for wage. But the fruits of their labor, today we are in the same way. We are kind of that I must say that these are the working class women, how they fought for our women's movement and for kind of women's rights. So, and here today, at the colleges, universities, everywhere, we send greetings to people, and we are writing, and we are celebrating Happy Women's Day, Happy International Women's Day. So, let's not forget the history. So, along with the heritage, if we see that now, after kind of, let's say that now more than 100 years have passed, and 1922, it was in Russia, Lenin's declaration that it should be that March 8th should be celebrated as the International Women's Day, coming from working class women's movement, working class women's kind of fight for their rights, which has been such a glory to the kind of women and all over the world, I must say. So let's remember at the kind of the history. So I'm always very interested because in
what makes us empowered to think about? That's a very big term, right? To say empowerment, women's empowerment, or women's, let's say, agency, or women's self-expression. We must get what we want. And how, what does it mean to be empowered, and how it is possible. There's two things I discussed, and as I just maybe given a couple of examples. So, think about it, that let's ask ourselves, what do I want to become? And what do I want to become? Because if you realize, because when I visit, I work with rural tribal women in Odisha, and I get all my inspiration from these women. Let me give you one example. I have been working in, now lately, I have been working in Ranapur, Noyagarh district, and women in 212 villages that in the Noyagarh area, Ranapur, that they are known as Engapali women. Engapali, that means they take turns and they protect the forest with their stick. Engapali. So, and when I visited them, I read about them, and when I visited them, I was listening to their stories. How that for them, forest is not just their source of living, forest is their heritage, their identity, their family, their companion, and they know that if the forest is not protected, their survival is threatened, is impossible. So we are going to protect the forest from the forest officials and as well as from the kind of the lockers, from the thieves. Hopefully, one of the women told me, madam, you know, that there will be no loggers, there will be no thief without the support of the forest officials. So I thought that's kind of something to think about. So coming back to that, these women, what have I done? What gives me the strength? Talk about empowerment. Empowerment is not just in the kind of higher education, I must say. Empowerment is to do with one's own conviction that yes, I can do it. Irrespective of all the hurdles, all the challenges, all the kind of adversities, that yes, we can do it. And it does not have to be a kind of flashy, big organization, or kind of the social workers, educated, middle class social workers. But it is to do with a small group of women. And this working women I must emphasize that when this movement started in the 1970s, but it was kind of failing. The jungles were cut down and they are becoming barren. It is the mountain is called the Manikya. And they were just losing their resources. So the women, the Congo women, along with the Dalit women, and also other women, they took it upon themselves to protect the forest. And they are the first ones that who have the right over their forest to protect it. And there has been a lot of pressure from the forest department that, hey, let's just say the resources to be 50. So under the Vana Samrakshana Yojana. But women know that if they lose the right over their forest will be gone and they will be gone. So what I am trying to emphasize that just like the working class women, the service class are kind of the labor class women, I realized that the power is at the grassroots. We must kind of see that kind of how, where do I see the power, where do I see the kind of agency. So coming back to Professor Nath told me to tell you something which is kind of to be encouraging for all of us. I realized that my strength, I realized that kind of that growing up as a girl
and even the expectation that, oh, a girl will just get married, right? To think about it. So I'm sure many of you, there must be pressure at home that, okay, now you are studying, whether it is your master's and you are getting your degree, but ultimately that our identity is with our, with our husbands, that we ultimately will get married and then we start our family. But I must say that the main source, or the main focus for empowerment came to and we got to looking at the history, the kind of the women and the textile workers from the United States, I think in the 20th century. I see that the power lies in our kind of economic independence. Economic independence is the key for the women. So whatever we all do, that I must say that our goal must be that with the role models, with the kind of, with the resources that we have, we must make the most of it. And we must use our education as a weapon to stand on our own. And today, if all these wonderful people who are here for their education, you agree, Dr. Jack? That kind of we are here for our education, we are here for kind of what we stand for, what kind of, and what we like, and other kind of, and we are here for our own position. That so it is very important for us. There is nothing for small or big. That I must say that whichever situation we are in, most important is the dignity of labor. That and then the dignity we kind of we achieve or we derive from our economic independence. There is a beautiful saying by Gandhi that as long as you are dependent on somebody, you simply cannot make your own decision. Do you agree? I want us to think about it. That you cannot make your own decision as long as you are dependent. As long as you are dependent. So I would say that in order to whatever it is that for our you are here today, mainly because of your own efforts, your intelligence, and This call is now being recorded. It's your own kind of labor, and all the kind it's your own will. So never ever give up on your own strength, on your own determination. So the role modeling is the key that can who are our role models and how we can really come them. And second, in order to achieve that kind of our own sense of empowerment, the key is that our economic independence. So never ever give up on that. Third thing I would like to emphasize that if a sense of social justice, that I must say that if there is, as you know, that there is tremendous sense of injustice happening in our society, especially for the people who are different, for the minorities. I want us to think about it. So, like whether it is how rural women, or whether it is the kind of situation, or whether it is, let's say, the transgender people, the kind of that we think about, or whether it is the kind to think about that or the elderly, the aging. So here, I must say that let's not keep our close to any injustice around us. It is very important for us to be aware and to kind of, to point out, to also to make a difference. The point that I want to make is to make a difference. So if you are thinking that kind of that
and it's not just, it's not right. I must say that we must stand up against injustice. That whether it is my own parents, or whether it is my teacher, or whether it is my own elders, whether it is, I would say, my own siblings, my own friends, it is very important for us to stand up against any injustice. Just for example, many of you are working on, I did this lot of stuff about cybercrime, but whether it is whether it is now President Trump after he got elected, and mainly he got elected, he thinks that the people who are different, that they must not be harder. For example, the transgender people, taking away all the resources from the service of the transgender people, and not even acknowledging that kind of the transgender rights, or even that kind of education is being undermined. So I must say that it is important for us to stand up and to kind of to do what we think is right. So three things I'm emphasizing. One is never ever underestimate our own heritage. And it is always good to see the kind of things from a distance always look good, right? That we say that, oh, that person has that much, and I'm what about me? So always things from a distance can be great. But let's be proud of our own heritage. Our heritage has a sense of complementarity, a sense of inclusivity, a sense of kind of a holistic, realistic perspective of looking at ourselves in relation to others. That's, and I must say, and the power, the agency. I remember growing up with all these women-focused festivals. Very recently, two young women, one is growing up women, they were asking that our brothers are going through the sacred ritual ceremony. What about us? Are there any rituals for women? So it made me think that we grew up with so many different women-focused festivals. Let's just bring that up and see that kind of what that it has given us and what it should provide, so that we should not forget. Because when I see as women, the Oriya women coming to the United States, and these Oriya women, they come as quickly married and an H4 visa, that is dependent visa, but I see them reskilling themselves, becoming entrepreneurs, taking up jobs, and standing up to the kind of the society where there are many barriers, but they are doing extremely well. So what I need to say, so that means I realize that let's not forget about it. Number one. Number two, I emphasize that the economic independence. That today, I would not be here, or I would not feel good about myself if I was not economically independent. So it's very important. Let's not let's not forget that whether we need it or not, it's not a question of need, it's a question of must. It's a question of a kind of a requirement. And in order to kind of realize my own work, my sense of agency, my sense of self-expression. And third thing I'm emphasizing is that the justice, that we must stand, because we live in this world, because we realize that we are very much promoting, we are guided by a majoritarian interest, the interest of the majority, that whether it is religion, or whether it is caste, whether it is education, or whether it is, let's say, the kind of the economic class situation. So we must emphasize that kind of, we should look beyond the majoritarian interest. Let's keep in mind the interest of the marginalized, the disadvantaged. Because there's a beautiful saying, and if some of you have read, that this Atticus in this book,
that the father is telling his daughter, 13-year-old daughter Jane, Jane comes and complains about how some of her friends didn't treat her well. So the father is telling the daughter, did you ever try to put your feet into the shoes of others in order to understand how they feel? I want us to think about it. Did you ever try to put your feet in the shoes of others? That means, did you ever try to feel the way others are feeling? So that way, to broaden our horizon, to broaden our own understanding, our own awareness of the people who we may not be, paying attention. So we feel very comfortable being people like us, right? So it is very important for us to get out of our comfort zone and to think of the people who are lesser. And they are lesser not because they deserve it. They are lesser because of so many circumstances. So it is very important for us to be aware of the people who are not treated well, so that way we can be together. Beautifully, Margaret Mead, the great social anthropologist, said that movement, revolution happens not with a big group, not with the whole, not with just kind of the whole society, but revolution happens with the effort of small group of people. It's just kind of a small group of people make the difference. So on the International Women's Day, let's remember our sisters, our grandmothers, our great-grandmothers who made this possible for us to celebrate International Women's Day. Number one, and at the same time, let's we become a small group that to kind of bring in the change that embody the role model and bring the change ourselves. Thank you again for the opportunity to speak to you all, but I am very proud of you all and speaking today. Madam Namaskar. Madam Namaskar. Can you hear me, Madam? Madam, Namaskar, Madam. Good afternoon. In fact, good evening. It's your late night. And thank you so much. In such a late night also, you gave your kind consent to encourage our students. And your speech, your deliberation was very motivating. Our students, I am sure they have motivated a lot by your speech. I once again summarize and request my dear students to remember the things which Madam told. The first is education. The first is education. The second is economic independence. And the third is justice. So, तीनटा जिनस मैडम कहले शिक्षा आउ अर्थनैतिक स्वाधीनता ही महिला मानकु नारी मानकु प्रकृति सशक्तिकरण करि पारिबो, प्रकृति सशक्त करि पारिबो। मैडम होचंती जने ओडिया झियो, किंतु से वर्तमान अमेरिका रे अवस्थापित। से आम पई जने रोल मॉडल, से आम पई जने रोल मॉडल। सेति पई मु भाबिली आजिकार ए अंतर्जातिक महिला दिवस 2025 रे से ही होचंती श्रेष्ठ महिला जने तम मानकु इंस्पायर करिया पई, मोटिवेट करिया पई। ओडिसा रे जाई मैडम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता क्रूज रे प्रोफेसर इन एंथ्रोपोलॉजी अछंती। ता व्यतीत ओडिसा रा संस्कृति, ओडिसा रा कल्चर, ओडिसा रा ट्रेडिशन को बंचाई रखिचंती। से ओडिसा रा प्रेसिडेंट मध्य
तो मैडम निहाती भाव में आम समस्त जड़े रोल मॉडल मैडम आम अनुरोध रक्षा कले थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर काइंड कंसेंट फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम मैडम ट्रैवल टुडे ऑल द वे टू go to his son's place still she agreed thank you so much madam for being with us and we shall stay connected and we shall invite you in the coming session to our university once again to listen to you thank you madam. Thank you so much, Honorable Vice Chancellor. Now, actually, we have a very different kind of agenda, but we have one of the outstanding female head of the department and superintendent of women's hostel, which we thought of, felicitating today. But she has her train she has to go somewhere for some other very important work, so she can't miss that as well. So therefore, we would like to, in the presence of all the audience, we would like to felicitate this outstanding woman, this phenomenal woman for her exceptional contribution as head of the Department of Geography, Dr. Subhadra Roy, and this is the intention of Nagabali Women's Hostel, because Honorable Vice Chancellor ma'am thought that these things are not at all easy for any of us to give extra time and contribute for the progress of the university. So here I request Honorable Vice Chancellor Madam and your Deputy Registrar Sir to felicitate our phenomenal woman today, Dr. Subhadra Roy. बहुत जन महिला बहुत जन नारी बहुत जन female faculty they are working a lot for the university and this is a perfect day to felicitate them. Sumana madam is one of them who is heading Nagabali hostel and who is also the HOD of geography. Since 3 years he is sparing her valuable time for the university, for the hostel, for the girls, for the department. So this is a small token of love, small token of appreciation for Sumana madam. I request everyone to give a big round of applause for this phenomenal woman. Then we are going to celebrate today. Today is our day where all of you please cheer for her. And cheer for yourself also, because you all are sitting here patiently. Congratulations, Dr. Sumana Roy, for your achievement, and all the best for your journey today. Thank you. Over to you, Policy Madam. I'm now feeling really it's our day. It's a day of appreciation, it's a day of honor, and thank you, Annapurna Madam. And you have said about political independence, about philosophical independence, even about ecofeminism. We are really thankful, Annapurna Madam. Now is the time to introduce our second speaker, Vaisali Sepali Jha ma'am. On behalf of МАНИКЕSHWARI University, we all are welcoming you, Sepali ma'am. Now it's your turn, ma'am, Sarita ma'am, to introduce Sepali ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Policy ma'am. So today we are having another eminent personality with us. So once again, I want to thank Professor Annapurna Pandey for our thoughtful session and engaging session. Thank you, ma'am, for inspiring us, for motivating us, and for your kind words. So, Professor Sepali Jha, ma'am, teaches at the Center for Political Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Professor Jha teaches course in political philosophy, feminism, and in the philosophy of social science. Ma'am has contributed lots and has published many articles, books in many international journals. One of his most important work is Western Political Thought,
and on the Constituent Assembly of India debates on women political representation, as well as on the experience of trans-migrant and working women in Asian countries. So ma'am has contributed a lot, and ma'am is having much experience with women who are working in Asian countries. So thank you, ma'am. Actually, one thing I want to say, ma'am is not well. Ma'am got fever few days back. Still, ma'am got agreed to be our resource person. So thank you, ma'am. Thank you so much for accepting our invitation and blessing the occasion. Thank you, ma'am. It's over to you, ma'am. Sipali, ma'am. Yes, ma'am, carry on. Very warm good afternoon to all the faculty members and the dear students. And I'd like to begin by thanking the faculty and the Vice Chancellor for inviting me and allowing me to be part of this national symposium on the role of women in Viksit Bharat. And I'm honored to be part of your deliberations on this very important day. So, since I'm a political scientist and specifically my training is in political theory, and engaging with political theory, I have realized that this discipline of political theory has been really enriched by so many contributions by women scholars who have relooked at the main concepts of political theory from the perspective of women. Because the claims of political theory to be universal, when they're talking about justice, or they're talking about liberty, about power, about the state, and so on, these claims have been interrogated with a certain urgency and with a certain, insightfulness by these women scholars. So there is so much to discuss there. But today, when I was thinking about the topic of the role of women in Viksit Bharat, what I was reminded of was another political philosopher from long ago. So I'm thinking of John Stuart Mill and his essay on the subjection of women, which he published in 1869. So in this essay, if I'm going to begin with this essay, Mill argued that the subordination of one sex to the other is one of the chief hindrances to human improvement. Right? So he is saying that given that women constitute one half of the population of a society, if we prevent women from educating themselves, if we deny them opportunities to develop their skills, if we put all sorts of obstacles in their way, then it is society which suffers the consequences as well. Because if women are educated, if they're able to further develop their capabilities, then it will be society which will benefit from the use of these capacities, from the use of these skills, right? And you can see that this kind of an argument is often made by economists in India. So, for instance, an economist will argue that if we could increase the work participation rate of Indian women by even 10%, we would add $770 billion to our GDP.
sense that it's not just a question of fairness, it makes financial sense. So what I'm trying to tell you is that these types of arguments have a utilitarian flavor. So the argument is for the benefit of society. Let's not hold women back. When women get more opportunities, it will be society that will benefit. But to take you back to Mill also made the point that the inequality between the sexes that prevailed then, that was wrong in itself, not only because it slowed the improvement of society, but because it was unjust and undemocratic. So, in this way, he is moving beyond the utilitarian framework, which I think is an important step. So, to come to this issue of inequality, if we look at the global gender gap reports of the World Economic Forum, whether we look at the 2021 report or we look at the 2024 report, either of these, if you look at their indicators, they use 4 indicators, and what they're doing is they're looking at the situation of women in comparison to men in the domains of education, in the field of economic opportunity, in another domain of health and survival, and finally in political empowerment. And in these domains, they rank the countries according to how well or badly they have been doing. And if I'm going to talk to you about the 2024 report. So in this report, when you look at education, out of 146 countries, India has a rank of 112, around 112, and India has done pretty well India has made great strides in improving the educational opportunities that are available to women, increasing literacy rate, more women in higher education, as we can see, in our picture here when we look at young students. But if you look at other indicators, so if you are looking at, for instance, the domain of economic opportunity, then you must be reading in the newspapers, this is discussed so much these days, that the work participation rate of women in India is quite low. In these reports, the regions of the world have been divided into 8 different regions. And the South Asian region, most countries in the South Asian region are in the same boat, that their work participation rates with respect to their women are pretty low. And India sometimes becomes a cause for more concern because in some Asian countries, from a low rate, there is an upward trend. But in India often, or some years back, there was a declining trend. So, as you heard the last speaker, when she said that, economic independence is an important tool of empowerment, so the situation becomes concerning in India when we see that these economic opportunities are not so available. But in this report, apart from economic opportunities, another indicator to measure this economic standing is that when women do enter the paid workforce, what is the percentage of higher managerial positions that these women hold? Are they able to break the glass ceiling and so on? These questions. So, taking these variables into account, India's rank out of 146 total
a large country, such a large democracy. All right. So that is certainly something that we need to think about for health and survival. The gender gap reports, they focus now on the sex ratio. But we are already familiar, isn't it, from the 1980s, late 1980s, with the work of Manikya, when he talked about so many women missing in North Africa and in South Asia. He wasn't really looking at the sex ratio at birth. He was looking at women's morbidity. You know, how much nutrition do they have access to? What kind of health care? Why is their health, you know, a concern at the very last moment, and so on and so forth. But these reports are looking at when they are, you know, trying to quantify this variable. They look at sex ratio and they look at widespread intimate partner violence. Right? So with these kind of variables, again, India's rank out of 146 countries is low at 142. So there's a wide discrepancy here. When it comes to political empowerment, the situation is much better because India is at a rank of 65. And the variables here, I think the rank is higher because one of the variables used is whether the country has had a female head of state in the last 50 years. Other considerations are what is the political representation of women, right? So even though we did have Indira Gandhi as our prime minister in the last 50 years, but women's political representation is less than 10%. And this is a bit of a paradox because all of us, you know, since we have so many elections, we continuously read about increasing women's turnout in elections, but this is not translating into more representation in the national legislature or in the state assemblies. Of course, the report also looks at other variables like what percentage of women hold cabinet minister positions and so on, ministerial berths in the government. So I think, you know, one area of analysis could be if we looked at the discrepancy between these four variables. Why is it the fact that with education we have been able to achieve improvement with respect to women, but why is this not translating into other areas and what are the implications? So that is something that we need to kind of think about, but that is for later. What we can clearly, conclude is that this level of inequality will definitely have to be addressed if we are to have a vision of a Viksit Bharat. So that's something to keep in mind. Then, review about was that different analysts who talk about the position of Indian women, they focus a lot on the care economy. So I'm thinking of the work of someone like Indira Gandhi, who argues that it's not that women are not working. Women are shouldering the burden of unpaid care to such an extent, right? So she makes an argument that what we need to do is to recognize, reduce, and redistribute this involvement of women in unpaid care, unpaid work. Okay, so when you're thinking of
recognition of care work. With modern societies, as we know, there emerged a kind of a split between the public domain of men and the domestic and the familial sphere of women. And because women's roles or gender roles were differentiated, and women's role was seen to be take care of the family in this way, and it is seen as part of their nature. Therefore, this work that they did in the domestic space got defined as a labor of love and not really as work. It was as if women were expressing their nature. They were fulfilling their nature when they did this work in the home. So it was really not a form of work. It was not seen as burdensome. It was not seen as work. Right? So the idea there is to at least recognize that this is work. This counts as work. And then once that step is taken, to see that it gets recognized in different accounting systems that institutions use and so on, right? So one is recognition. Second is to reduce this work, because we know that in many rural areas, just collecting water for cooking purposes or collecting firewood and fuel for doing this work, that takes so many hours. And so therefore the government intervenes, has tried to intervene and needs to intervene more in order to reduce the burden of this work. And insofar as reduction is concerned, I think we can talk about different government policies and what effects they have had. But when it comes to redistribution, that becomes a really thorny issue, because the idea is not just to recognize it as work, as valuable work, but to make sure that it gets shared between the genders, instead of the situation that when women begin to join the paid workforce, the result often is that there is a double day, etc., etc. And so we need to think about what is called, we need to move away from the pass-on approach to unpaid care work. That is, we don't allow men to pass this work on to women, and then to allow better off women to pass on this work to poorer women. But we need to find some ways of redistributing this work. This area just remains kind of untouched, or very lightly touched, I would say. So I would just like to give you one example here with respect to recognition, reduction, and redistribution. Economists like the ones I mentioned, other analysts in their studies have looked at, whether a government scheme like providing gas connections to rural women, does that lead to a reduction of the unpaid domestic work that they do? And I thought that one of their findings was very interesting when they said that they found out that the decision to refill the gas cylinder does not lie with the woman of the house. That decision she can't make. So they found out that in no case was this gas cylinder refilled more than thrice in a year. So the intention of the scheme to reduce the burden of this unpaid domestic work, that didn't really come to fruition, because the decision-making power still remains away from the woman. So if we think of these
in front of us, especially if we are thinking of Dixit, Bharat, etc. Right? So how to strengthen the position of women with more decision-making power? So is increasing the participation of women in paid work the main route we follow? Here I'd just like to make one point. We see that women are, because many women are not in the paid labor force, we see them as dependent. We never see the men and the other family members as dependent on these women, because as you know from social reproduction theory, it is that work in the home that allows the male worker to reproduce, let's say, his labor power and to be available at the office or at the place of work for those 8 hours without a worry about what's happening at home, what's happening to the children, or some older parent who is at home, or something like that, right? So, therefore, along with, I mean, looking at my own experience, I sometimes feel that with a decent job, a permanent job, etc., it's still been very difficult to, hold on to my rights as just a human being, equal rights. So I agree that paid work is absolutely, that seems to be in the way our economy is structured, our society is structured, that is very important. But we really need to somehow push for this redistribution of all this other work that women have always done, continue to do, and are not even, again, it's a lip service. I think there's no real credit that's being given to them. So I think for young people like you, that is the challenge of this idea of Dixit Bharat. It is an idea of justice, as Professor Pandey said, of fairness. So the improvement of society, it has to come with it has to be a fair system of reciprocal benefits. Then we can say that this is a model that needs to be emulated. I think it's a pretty challenging task, and I think that young women should, I'm sure they do also see the enormity of the task, but we have made some, we have, my correspondents said that with the help of other women, we have made some steps in this direction, and we can, think of achieving this goal, but we have to both look at the domain of paid work as well as think about recognizing, redistributing, and reducing the unpaid work that women already in such large. Thank you so much. Thank you again for giving me an opportunity to share my thoughts. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your wonderful deliberation. And thank you for giving us the idea of Dixit Bharat women. You talked about political empowerment, economic empowerment, and definitely there should be recognition, and redistribution
And thank you, ma'am, for motivating our students. It's really mean a lot, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am, for giving us your valuable time. Once again, thank you, ma'am. You stay. That's good. I wanted to hear you because I have so many things to kind of to have a wonderful conversation with you. Because it is so true. Because as kind of we say that the labor force that has gone down, women's labor force, as we know that women never stop. Exactly. Including us. Women, and especially I see that in the kind of the working class and the women who work so hard, but at the same time they have to deal with also this kind of the so-called men as the wage earners and as the bread earners. So you have said it so beautifully. Where should we see? And also, the bottom line is women are not valued. What about this says that where is it coming from? This kind of this 100 million present missing. Now maybe it's many more. So it's kind of the value that is so important that we really need to think about. And yeah, because it's kind of, and then only the economics is that adequate to think about. Yeah, you put it beautifully. I wanted to hear it so that you at least such a beautiful to have the conversation. Sorry, I think we are So glad we met, even though it's on the screen. Yeah, I feel that we have lots to discuss and not in common. Talk about, yeah. Thank you so much. Our heartfelt thanks to both the ma'ams, Stephanie ma'am and Annapurna ma'am. And now, I think the question was. not any question from anybody, from any student? No question. Echo is coming when too many mics are on, so that's why I'm switching off. No question. Actually, it was so crystal clear. I think all have understood about philosophical independence, about financial independence and political independence. Thank you so much. Our heartfelt gratitude to both the ma'ams. Now it's done. Now it's done. Such a nice, just wanted to hear you. Otherwise, we would have this opportunity. It's late for you, that's right. And I have been traveling the whole day. So I was on the back. Because I thought that this is whichever way we get. This is the learning experience for us. Thank you so much, ma'am. Actually, time is fleeting away, so we have to sum up. So yeah, it's called learning. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Our heartfelt gratitude to both Safali ma'am and Annapurna madam. And it was so crystal clear that all the students, faculty members, all are silent. They were listening to both the speakers. Again, I'm thanking you, both the madams. Now it's done. आमे जोटा पई बहुत बहुत अपेक्षा करी बसिथिलु सही समयटा आम पई पहुंची जाईची हमरा अति प्रिय ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर निवेदिता नाथ मैम and our deputy registrar major Dr. Jaydev Sahu sir ebe amasaya उपस्थित अछंती मु रिक्वेस्ट करिबी झरना मैम को and टीम को मैम एंड सर डायस को ऑलरेडी आसी सारी चंदी बट मुझे कष्ट देवी समान को आमे टिके छोटिया फेलिसिटेशन करिबो मैम एंड सर दुई जन को बिकॉज़ आमे बहुत बहुत भाग्यवान कि हमकु जने लेडी वाइस चांसलर मिल चंदी आज रोल मॉडल हमको दूर को जीवा को पड़ी नहीं हम आखि आगरे ही रोल मॉडल मिल जाय चंदी आज नेशनल सिम्पोजियम फॉर विकसित भारत on the very auspicious day of
International Women's Day 2025 समस्त ताली मारी बापाई अनुरोध करी हमारा पूरा टीम हमारा पूरा दुर्गा बाहिनी जार मेंटर थिले निजे डॉक्टर निवेदिता नाथ मैडम आमे जते बरे खोजुथुलु हमारा चीफ स्पीकर ऑफ द ओकेजन को हमारा दुई जन मैडम से पहले मामा अन्नपूर्णा मैम को छाड़िला परे आउ काहको हमें डाकिबु आखि आगरे जते बरे डॉक्टर निवेदिता नाथ मैडम थिले सते बरे we felt very fortunate our own ma'am is with us आउ जे सबु बरे फेमिनिज्म रो कथा कहंती नारी सशक्तिकरण रो कथा कहंती से आउ केही नुहंती मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर को अप्रिशिएट करी आमे निजे ही भाग्यवान माने करछु कि आमे एमिति जने मेंटर को पाइछु जहां पाए आज all the women all the ladies of this institute at least they are safe and they are secure आमे एमिति गोटे पृथ्वी गढ़ी पारिछु जोठी हमर झियो माने सुरक्षित अछंती वो माने भी झियो मानको इक्वाली भूनी भाबरे देखुचंती तो एमिति गोटे जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी आमे आज गढ़ी पारिछु एटलीस्ट हमर विश्वविद्यालय रे तो एबे से समय आसी पहुंची जाईची हमर अति प्रिय मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर को अनुरोध करबी आम पाई दीपक बाणी देबा हेबे Thank you, madam. Esteemed Vice Chancellor, Dr. Nivedita Nath madam, esteemed invited guests who are online from California and New Delhi, Dr. Manikya madam, Dr. Jharnarani Dhangramaji madam, my dear Parita Bag, and all esteemed ladies of this occasion, my dear colleague Sanjeev Kumar Sahu sir, and all other faculties present here, and my elder brother Yukta Lalit Kanungo sir, all dearest students of this university, and for today and this day is dedicated to the women who are sitting in front of me with a great happiness. I congratulate all of you on the occasion of International Women's Day. Since 1911, this day is being celebrated every year. আজি অনেক বর্ষ হয়ে গলা 100 বর্ষ বিতি গলা এই আন্তর্জাতীয় মহিলা দিবস আমি পালন করি আসুছে নিহাতি ভাবে বর্তমান আমি নিজকু আমার जो समाज अच्छी निहाती भाव रे देखा पड़ो जे नारी माने केते प्रगति करिछंती नारी माने तांकर जो पोजीशन अच्छी तांकर जो डिग्निटी अच्छी सेटा केते मात्रा रे
बजाय रखी पारिछंती से सबु आकलन करिबार अनुशीलन करिबार समय वर्तमान आसीछि and this is the right time to have an assessment of the progress, development, the rights of the women. बहु आगरु नारी मानंकर खूब सम्मान निहाती भाव थिला ता समस्ते जानती वेद शास्त्र नारी मानंकु सम्मान जणाइछि एवं जणाई आसुथिला किंतु तथापि एमिति किछि शास्त्र थिला जहाकी ढोल नारी एमानंकु माने शासन कले ही बाड़ेले ही ठीक हुअंती बोली आमर किछि शास्त्र रे पुरुष मानक द्वारा लिखित हैला ताहा निहाती भाव रे आमर समाज पाई ठीक नथिला एवं गोटिए गोष्ठी जोटा कि नारी एवं पुरुष समाज यही समाज से नारी माने पददलित ही रही गले इंग्रेज मानकर शासन काल रे चेष्टा करागला केमिति नारी शिक्षा को अग्राधिकार दिया जिवो ज्योतिबा फुले एवं अन्यान्य महामहिषी माने नारी शिक्षा को गुरुत्वारोप कले एवं नारी किछि मात्रा रे निजर अधिकार पाइबारे सक्षम है पुरुष नारी उपरे निर्भर करी आछि नारी पुरुषर सबु किछि किंतु तथापि पुरुष नारी को भोग्य वस्तु हिसाब रे बहु दिन धरी रखी आसी धीरे धीरे नारी माने जेते बेले शिक्षित हेले शिक्षा माध्यम रे से माने जानी परले जे पुरुष द्वारा से माने निर्यातिता धीरे धीरे सेमानंकर भाषा बाहरिला सेमानंकर कथा बाहरिला एवं सेमाने तांकर जो अधिकार अछि अधिकार को मागिले पुरुषतांत्रिक समाज रे नारी को पचरा जाए नाही 1891 मसीहा को हमें जदि जिबा ताहले the year of consent the age of consent for physical union was 10 10 वर्ष रे गोटिए झियो ता इच्छा रे माने शारीरिक संपर्क रखी पारिबो एटा 1891 मसीहार गोटे डाटा कहे 10 वर्षर गोटे छुआ माने खेलु था किंतु ताकू पुरुष समाज कहले नहीं 10 वर्ष रे शी इज एलिजिबल माने यू सी the torture of the male society एवं माने तथापि जदिओ सती प्रथा उच्छेद हला इत्यादि इत्यादि अनेक कथा हला तथापि भी माने पुरुष नारी को तांकर जो मर्यादा तांकर जो अधिकार देबा पाई संपूर्ण रूपे राजी हला नहीं अराजी हला धीरे धीरे उन्नति घटिला स्वाधीनता भारतवर्ष स्वाधीन लाभ कला एवं 1951 मसीह तथापि नारी मानकर साक्षरता खूब कम थिला एबे भी जदि देखा जीवो ताहले नारी साक्षरता पुरुष मानक तुलना रे कम अछि। गोटे आकलन रु जना जाए
जे वर्कफोर्स जोटा में कहूचु सेइथिरे जेते बेले ग्लोबल फेनोमेना हला 47% आम इंडिया रे तार फेनोमेना होची 33%। तेणु एबे भी अनेक नारी माने माने तांकु काम दिया है नाही एवं से माने माने समाज रे पुरुष ऊपर निर्भर करबा पई बाध्य होछु। मो गोटे लिखिथिली धरित्री रे बाहरिथिला समय क्रम रे नारी एटा माने एमती के 8 तारीख बोधे बाहरी 2023 मसीह रे एडिटोरियल पेज रे सेथिरे समय चक्र रे नारी रे मु एई कथा देखैथि जे नारी रो किबरी भाबरे माने अग्रगति घटिछि भारत वर्ष रे जो नारी को एते सम्मान दिया जाउथिला प्रथमे प्रथमे किंतु परवर्ती पर्याय रे नारी रो दुर्गति घटिला। तेबे से जाओ ना कहीं एबे भी दुख लगे जे आमर महिला माने पृथ्वी रे निर्यातिता। गोटे 2021 मसीहार गोटे आकलन जना पड़े जे भारत वर्ष रे 4,28,278 माने धर्षण मामला पंजीकृत होइतिला। एटा पंजीकृत कथा मु कहूची जोटा अपंजीकृत रही याठू हुए तो आउ डबल ट्रिपल ही पारे। तेणु नारी माने एबे भी सुरक्षित नुहंती। पाकिस्तान रे आई एम मालाला जदि कई पढ़ती ताले जानी परिबे जे मालाला पाठ पढ़िबा पई जेबे चेष्टा करूची ताठू छड़े निया होउची तार से पाठ एवं ताकू जेते से चेष्टा करूची पढ़िबा पई ताकू ये जो या कोन तालिबान माने तांकू फायरिंग करछंती खूब निकट रो किंतु तथापि से बंची छंती एवं 17 वर्ष बयस रे से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हिछंती। से कहले वन चाइल्ड वन वुमेन एंड वन पेन कैन चेंज द होल यूनिवर्स। पृथ्वी को परिवर्तन करि पारिबो से कहले मालाला कहले यूसुफ मालाला। तेणु कथा होची जे एबे भी कहीं की एमिति निर्यातना दिया जाउची। दुर्दिन रे अफगान महिला बोली मोर गोटे 2021 मसीह रे बाहरी थिला पेपर रे मु सेहिथिरे देखैथिली जे जदि नखपालिश लगेइबे अफगान महिला माने तांकर अंगुली को काटी दिया होतिला। एई एबर कथा मु कहूची अंगुली को काटी दिया होतिला। जदि कोनोसी संपर्क रखे पुरुष नारी सहित पर पुरुष सहित ताले तांकु पत्थर मारी मारी दिया हबो। एमिति अनेक जंत्रणा नारी सहिछि। तेबे नारी रो अभ्युदय धीरे धीरे होउछि एवं निहाती भाव रे आमे खुशी होबा दरकार। आज जेमती मु बहुत खुशी अछि आज देखुछि जे आम विश्वविद्यालय नारीमय एवं नारी मानकर जो जेछना जो ज्योति ताहा आज मु देखि पारिली। नतमस्तक हेबी आमर वाइस चांसलर मैडम का पाखरे कहीं ना से नारी नारी मन कथा तांकटू अधिक किए जानिबो। तेणु सेथि पई नारी मानंग पई गोटे आसर सृष्टि कले एवं कहले जे नाई सर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन डे फॉर वुमेन निहाती भाव रे करा हबो। एवं आहुरी बड़ योजना थिला से योजना किछि मात्रा रे टिके पोस्टपोन कर दिया है मात्र 2-3 दिन परे आपण माने निहाती भाव रे लोन पाखरे गोटे नारी माने मुख्यतः निजर जो समय को उपभोग करि पारिबे एडा मैडम प्लान। अपेक्षा करते सरप्राइज अच्छी से दिन जो दिन तुम मान अच्छी। तेणु नारी निहाती भाव रे महान। नारी बिना पुरुष निहाती भाव रे शून्य। गोटे
कविता लिखिछंती माया अंजुलु से कहिछंती नारी केबे हारिबो नाही नारी जीतिबो से लिखिले यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री कवितार ना हला स्टिल आई राइट बाय माया अंजुलु you may write me down in history with your bitter twisted lies you may trot me in the very dirt but still like dust I will rise मोड़ीबी तुम्हें मते चेष्टा करूछ अवदमित करिबा पई किंतु हे पुरुषतांत्रिक समाज मते तमे अवदमित करि परिबो नाही मोर देना बाहरी सारिछि मु उड़ीबी मु फनिक्स बोली हेबी मोर मृत्यु नाही मो अमर एवं मो निहाती भाव रे उड़ी चलीबी देखंतु माया अंजुलु की सुंदर भाव रे लिखिछंती आउ जने लिखिले द राइट्स ऑफ वुमेन बाय अन्ना से लिखिले यस इन योर वुमेन राइट एसर्ट द राइट उठो निजर अधिकार को साब्यस्त करो वुमेन थ्रू लॉन्ग डिग्रेडेड स्कॉर्न ऑप्रेस्ड or born to rule in partial laws despite resume the native empire over the breast oh dear woman rise it is your time look at the inspiring poem ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା विद्युत प्रभा देवी लिखिछंती मु महिला से लिखिले जेउ देह आ मन रे मोर जन्म नेला नुआ जीवन सेही देह आ मन को नै मु गढिली नुआ सपन बाटे आसिला बाटुआ अनेक बेले मोर निज स्वप्न को छाड़ी मु तांक स्वप्न को देखिली मने सेमानंकर स्वप्न सरी गला मोर स्वप्न अपूर्ण रही गला तथापि मु आशा छाड़ी नाही मो स्वप्न को सत्य करिबा को मु महिला मोर शक्ति अपार सही शक्ति रे मु गढिबी नुआ जीवन नुआ समाज मु महिला I am that woman I will recreate the history I will create a new society look at आ गोटे कविता मनोरमा महापात्र लिखिछंती टिके टिके मु कहूची समय नाही मैडम को आदेश हला बहुत कम समय कहबा काहे ना समय हेइ जीव न हेले किंतु मु जानुची जे हम झियो पिला माने आज भोक लागु नै भोक लागुची पिला माने भोक लागुची ओ लागुची बंद करबा ठीक अछि जुग जाए जुग आसे कवितार ना हला जुग जाए जुग आसे लिखिछंती मनोरमा महापात्र जे समाज रो माने प्रकाशक थिले जुग जाए जुग आसे नारी रहे अविचलित सेही सती आजी हेउची स्वाधीना स्वाभिमानित से नुहे केवल गृह लक्ष्मी से योद्धारण रे से शिक्षिता से शिल्पिनी से नेत्री जगत रे आ गोटे छोट कविता पारिजात माला रचिली मु भक्तिर सुगंध रे अतीत जातना भूली जाई मन को शांत करी नारी जीवन और दुख सखा से दुख रे अछि मधुरता से मधुरता रे मिले आनंद भक्ति रे मिले शांतिरता तेणु नारी नियाति भाव रे माने समय आसी से उज्जीवित ही उठिছে एवं जेमिति मोर विश्वविद्यालय रे नारी माने वर्तमान जदि आपण देखिबे जे डॉक्टर निवेदिता नाथ मैडम को ठारू आउ स्ट्रांग की अछि मु स्ट्रांग फिजिकल स्ट्रेंथ कथा मु कहू नाही मेंटल स्ट्रेंथ कथा मु कहूची मु देखिछि अनेक प्रेशर मैडम का ऊपर आसुछि विसी सार थिला बेले विसी सार टिके दबी जाउथि तांको भी मु खूब निकट रु देखिथिली मैडम को भी खूब निकट रु मु देखुछि किंतु मैडम सीधा सीधा कहउचंदी ना ना एटा ही परिबो नाही सेते स्ट्रांग एवं नारी सतरे स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग माने फिजिकल एस्पेक्ट छाड़ी दियंतु मेंटली एते स्ट्रांग जे जेते माने जंत्रणा आसु जेते जे आसु सब को से निहाती भाव रे दबे दे आगो को बढ़ी चलीबे डॉक्टर पल्लीश्री पटनायक तांकोठू बोली करी आउ किए स्ट्रांग लेडी अछि डॉक्टर झरणा धंगड़ा माझी डॉक्टर मधु मैडम मधुलिका साहू माने माने सब ए इंस्टीट्यूशन रो गोटे पिलार एवं मु देखुछि जे आजिकाली
मैडम को नेतृत्व रे मैडम माने महिला माने खूब सुंदर भाव रे काम करूछंती एवं आम इंस्टीट्यूशन को आगे नेबा पाई प्रयास जारी रखिछंती। तेणु निहाती भाव रे मु एई अवसर रे सेई नारी मानक पाखरे मु मोर मस्तक अवनत करिबी एवं से मानक मु सैल्यूट करिबी। नारी उठिले ही समाज उठिबो, नारी शिखिले ही समाज शिखिबो। तेणु सेथि पई नारी को शिक्षा दबाटा निहाती जरूरी एवं आमे समस्ते सेथि पई नारी मानकर स्वार्थ रक्षा पई आगे आसीबा उचित। आमे पुरुष समय आसीछि वर्तमान में रास्ता छाड़ी देबा दरकार। बहुत दिन रहिबा कथा नुह गोटे जगह गोटे पोजिशन रे। पुरुष बहुत मनमानी कला दीर्घ 7000 वर्ष 8000 वर्ष पर्यंत। वर्तमान 2-3000 वर्ष पई आसंतु आमे महिला मान को छाड़ी देबा हमर आशा। सत कथा मु बुढ़ा हो गलिनी युवक मानक पई रास्ता छाड़ी देबार मोर कर्तव्य। यही कथा मु कहूची जे आमे खूब दिन हैला एठी शासन कले वर्तमान आसंतु किछि वर्ष तांको अंडर रे रही किछि काम करिबा। अंडर तो नुह समकक्ष होबा तांकर अधिकार आमे दबा एवं आमे एई समाज को संतुलित करी गढ़ी तोलिबा। किंतु ए जाए पथ बहुत बाकी अछि पथ। आपण माने सिना शिक्षित हेले एई माने भवानीपाटना विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़िले किंतु जो माने एबे गाँ रे अछंती एबे भी से माने अवहेलित। तेणु जो दिन गाँ रो झियोटिए माने सामना को आसी पारिबो एवं निजर अधिकार कथा कहि पारिबो सेते बेले आमे जानिबा जे नारी तार अधिकार को से प्राप्त हैला। तेणु निहाती भाव रे एई दिवसर महत्व रही। मैडम को धन्यवाद देवी जे एडे सुंदर गोटे माने आसर जमाई पारले। मु कहली मैडम मु पुरुष लोकटा कोन पाई जीवी माने ये वुमेन्स डे किंतु मैडम कहले एवं मु भी भाबे जे पुरुष एवं नारी परस्पर परिपूरक। ए दी जण यदि नथिबे ताहेले समाज सुंदर देखा जीवो नाही, समाज आगो को बढ़िबो नाही। मोर मां नथिले मु नथांती एवं मु नथिले मोर पुओ किंबा माने मोर स्त्री नथिले मोर माने पुओ किंबा झियो नथांती। तेणु नारी सबुठी नारी ही अछंती। मोर शेष करूची कथा मु एने बसी बसी करी मैडम को टेबल सामने रे मु सेठी टिके जस्ट गोटे पद लिखि देली नारी तमे मां तमे असीमा जगतर दूर कर अमा जगतर दूर कर अमा अमा माने अंधकार तम बिना जीवन मो आसी जीव कमा। इंग्लिश रे लिखिली कमा तम बिना जीवन मो आसी जीव कमा। तमे पुष्प तमे रम्य तुमे ही पुरुषर संभावना। सौम्या लिखुनी सौम्या खराब भावे बोली न लिखी आज्ञा। हाँ मु सौम्या लिखा चाहूँ सौम्या मो पर लिखि दिखा। तमे ही पुरुषर संभावना पुरुष जीवन और तुमे ही ज्योत्स्ना। चहटी जाऊ विश्वे तुम बासना एतिकी ही करुछि कामना तमे नहीं तो नहीं मोर ना। थैंक यू समस्त अशेष धन्यवाद। अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रे आमे आविष्कार करूचु मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सार जने आशु कवि मध्य। तेणु आशु कवि को पाई बहुत जोरदार ताली ही जाऊ। हम उस माटी के वृक्ष नहीं, हम उस माटी के वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सिंचा है। बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मुझसे ही वृक्ष जे पहाड़ को चीरी आज मथा टिके ठिया आइछि
मो सही वृक्ष मो नारी मो समस्त बहुत बहुत धन्यवाद दूची समय बहुत सीमित कार्यक्रम आग को नबा एबे समय आसी उपस्थित होईची हमर एही अनुष्ठान पाई जो माने तांकर प्राण ढाली देइचंती सेमानकु सम्मान करिबा पाई हमर सम्मानिया कुलपति महोदयांकर इच्छा अनुसार आज एही विशिष्ट दिवस रे आमे सेमानकु सम्मान करिबु सम्मान जणाइबु एवं एथि पाई मो निमंत्रण जणाइबे डॉक्टर झरणा धांगड़ा माझी मैडम को तांकर नाम गुड़िक उद्घोषणा करिबा पाई। Thank you, Palistri ma'am. Now I request Honorable Vice Chancellor in charge ma'am and Deputy Registrar sir to come to the front so that we can start. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir, please come. Please join with us so that we can start felicitating the achievers of 2024-25. एमाने बहुत हमको हेल्प करचंती थ्रू आउट द ईयर आउट मैडम को ही इच्छा थला कि थ्रू आउट माने से माने एते कंट्रीब्यूशन करती तक रेगुलर टाइम बियॉन्ड टू द मैडम एटा डिसाइड करचंती मैडम को फर्स्ट बहुत बहुत धन्यवाद दो दी हम लोग डिफरेंट कैटेगरी है जे हमें किसी सिलेक्टेड फीमेल माने विमेन सब कंट्रीब्यूटर्स गुडा का स्टाफ स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज सुपरिटेंडेंट हम फेलिसिटेट करबा तो सेठी बाय हम स्टार्ट करबो वन बाय वन प्रथम हम स्टाफ रू स्टार्ट करबा हम पखरे जणे अछंती हम पखरे जे अछंती जे हमर पूरा यूनिवर्सिटी को क्लीनलीनेस रखिबा पाई तकर बहुत कंट्रीब्यूशन अछि तो वो डाकी भी सम्माननीय रानी नायक मैडम को आसिकी टोकन आ एबडा को ग्रहण करिबे मैडम को थ्रू आउट सेरेमनी हमर बहुत जन स्टाफ अच्छन अराउंड 7 जन केतले केतले 9 जन किंतु जेतले हम इमरजेंसी दरकार पसी रानी के डाको आजके भल कथा है कि आज रानी सुख करिছে तो सेति लागि ताको बहुत बहुत धन्यवाद से बहुत डेडिकेटेडली ताकर कामटा करिछन रानी को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू समस्त के अनुरोध करते कि खाई खाते रानी मैडम को लगी रानी ने बहुत सिंसियर माने এটা not just achiever but also sincerity diligence एते अधिक समस्त कंट्रीब्यूट करूछन डे इन डे आउट समस्त तो रेगुलर आरे काम करछन 9 to 5 परसेंट किंतु बहुत जण तार बियॉन्ड द बिहाइंड द सीन की बैकग्राउंड रे बहुत काम करके कंट्रीब्यूट करछन तो इट इज अ टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट फेलिसिटेशन दा तो सेति लागि समस्त के अनुरोध करबे कि ताली मारी कि ना उत्साह करबे आउ जे करे जे नाइ पाइ तुसे आज खराब की खबर पूरा ईयर अच्छे हम भेट करे सेलिब्रेट करबाई सब दिवस नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट हला अगर बहुत जन हमर संगे अच्छो ताली सीनियर नानी जड़े अच्छो से हला भाग्यवती नायक नानी भाग्यवती नायक खाली जणे बसीछन हमर से रजिस्ट्रार सारंगर से एंदा साइड रे वाला सेटा है भाग्य तेनो भाग्यवती को देखि आउछे जे तांकर ड्यूटी रे केबे सब हला नै कर 10 बजे माने 10 बजे पहुंचिए करम 6 बजे जिबे किंतु निहाती भाबरे से हमर यूनिवर्सिटी में मैडम हेटा में कहबा के चाहूली लंच टाइम रे सारा ऑफिस खाली पड़ी थी जमिंग लोकेशन रजिस्ट्रार ऑफिस सेटा होचन भाग्यवती रानी आउ मु गोटे जिनस विश्वास करछि कथा कम काम बेसी आउ से होचन तार ज्वलंत उदाहरण तांगर पार्टी रे बहुत कम कथा बाकी किंतु तांगर कामटा बहुत परफेक्टली करसन ठीक टाइम रे आसन ठीक टाइम रे जायसन एंड वेरी गुड लेडी वेरी गुड रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस बहुत बहुत धन्यवाद यूनिवर्सिटी तरफ से आपन डेडिकेशन लागि समस्त के अनुरोध करबे कि सारे वाले का उत्साह करबे ताकि कि हम पाठ पढ़ला भी तो देखते क्यों सुंदर लग रहा है कि क्या कंसिस्टेंटली से ये जो सारे काम कर रहा है
सेठी जब संकेत नॉलेज करबे लगी मैडम चाहते थे तो सेठी लगी थैंक यू नेक्स्ट हम स्टाफ माने अछन कंप्यूटर असिस्टेंट माने अछन जे माने हमके दिन रात हेल्प करूछन कंप्यूटर असिस्टेंट माने लाइथिले एग्जामिनेशन सेक्शन रे हो कि बीसी सेक्रेटेरिएट रे हो से माने लाइथिले हो तो हमर काम पूरा ही बंद हो जाता तो हमें स्टार्ट करबा श्रीमती जोगमाया प्रियदर्शनी महापात्र मैडम को थारो जोगमाया मैडम फ्रॉम एग्जामिनेशन सेक्शन से एग्जाम सेक्शन भी हैंडल करूछन प्लस नागावली हॉस्टल का भी असिस्टेंट असिस्टेंट से तो ताको स्टार्ट करबा हमें संगे ऑनर करबी मैडम सब गोटे छोट छुआ अच्छे सब बेले जेन माने महिला नारी एम्प्लॉई तांको सब बेले फ्री रही छै मैं 23 वर्ष 25 वर्ष वाला चाकरी करू छै मोर छुआ अच्छे से जिनसटा हमें मैडम को पार्टी रो केभे नै सुनी मोर के छुआ अच्छे मते लेट हो गेला मोर के छुआ अच्छे मते जल्दी दिवार के पड़ू छै आपण माने बीसी सर को पार्टी रो भी सुनिथिबे जेते फर्स्ट वर्ष परीक्षा हला से राती 11 तक भी नथिले सकाल 6 बजे भी नथिले गोटे छोट छुआ तो खाई किना से केबे ली नै मागी दे मोर छुआ अच्छे बोली शी हैज डन ऑल हर ड्यूटी विथ ऑल हर डेडिकेशन along with the hostel duty so thank you so much madam नेक्स्ट हमके जे मल्टीपल कैपेसिटी रे हेल्प करी असिस्टेंट से मिस पुष्पांजलि सिंह ये भी एग्जाम सेक्शन में अच्छे नंबर संगे प्लस हॉस्टल भी हमके हेल्प करी असिस्टेंट तो ताकि भी अनुरोध कर दी या पर ऐसी की तांकर फेलिसिटेशन हमें करते हैं थैंक यू जोगमाया मैम अपन को कंट्रीब्यूशन लगी पुष्पांजलि की तो पर्सनली देखी जे और हॉस्टल उधरती हॉस्टल डे इन डे आउट पूरा सामान को सके काम करके राती 9 टाइम भी पठिले से भी जने साइलेंट वर्कर लाइक आवर भाग्यवती नामी लाइक हमर जोगमाया मैडम तो थैंक यू पुष्पांजलि फॉर ऑल योर डेडिकेशन समस्त ऑडियंस माने होके गलना कितु टिके ताली मार दियो समझ कर लगी अच्छा आप बोलिए पूरे मुझे नहीं करता है ना धर्म लेता है तो पुष्पांजलि लगी अरे उधर भी हॉस्पिटल में बहुत सारी ताली मारो नेक्स्ट हमारे ऑफिस में विजिट सेक्रेटरीट में अच्छा सुबीसी रे हमने सोनिया रानी दास सोनिया सुबह तक पूरा मुझे तबले गले खाली हेल्प करके बताए मैडम को अच्छा मैडम सके 3 क्लास में लगी जो सेठी लगी एटा तो सोम्या के मैं धन्यवाद देबी से भी सेंटा ही हमर भाग्य आमे सब एते भल भल भियो माने आ मैडम माने पाई के से भी चुपचाप तार काम करसी सोम्या आ जेनटा कहले सेटा से करी देसी आ तार सिखबार बहुत आग्रह अच्छे एटा भूल कलु सेटा भूल कलु नुवा नुवा आमे कहूतलु तो किसी खराब नहीं भाबसी नहीं मैडम भूल कले तो कहबे ना तो ता बहुत सिखबार आग्रह अच्छे एका संगे 3 जन जॉइन करिले सोम्या संगे किंतु सोम्या इन स्टिल कंटिन्यू करूचे लाइफ रे कंटिन्यूटी का बहुत दरकार बहुत जन अच्छा इवन फैकल्टीज इवन इन ऑल ऑफिसेस इन भल पाइलो डेगी दियो से न भल पाइलो डेगी दियो इंस्टीट्यूशन लागि डेडिकेशन नाही थसी बट अराउंड 2 ईयर होबा से गुटे जगह रे कंटीन्यूअसली काम करिचे ता डेडिकेशन ता लव फॉर आवर यूनिवर्सिटी लागि बहुत बहुत धन्यवाद दोचे थैंक यू थैंक यू सौम्या बहुत हेल्प करी जो तुम्हें पति दिन रात पूरा देता वाले गले जी नेक्स्ट हमें एक्नॉलेज करवा और फेलिसिटेट करवा हमारे स्टूडेंट अचीवर मानके तापरे फैकल्टी तापरे सुपरिटेंडेंट के स्टूडेंट अचीवर रे हमर बहुत वंडरफुल वर्क करी की इंटरनेशनल फोरम रे यूएन रो कंपटीशन में भी जाई के पार्टिसिपेट करी की आशन मिस आर्या नायक are you here Arya receiving award somewhere else also so हमें कंप्यूटर रखी दो छु आउथरे मैडम को संगे हम फेलिसिटेट करे हम ऑल द ओकेजन रे से यूज हीरो ऑल राउंडर थे सिमिलरली वी हैव विद अस आदिति आचार्य ऑल राउंडर अचीवर फॉर पीजी she has represented MMU she is one of the toppers of her department plus she has represented MMU in every other forum in ODIA debate सकाळे निघाला की न्यूजपेपर कमरो different competitions and district level competition रे एबे इंटर यूनिवर्सिटी रे represent करिथिले MMU के सेथिले आदित्य आचार्य लगी उदती गर्ल big round of applause and all
She's such a sweet girl, like a sweetest one. अदिति के देखले मते मोर कॉलेज बेलर कथा मने पड़ी जासी से साइंस रो स्टूडेंट आए नॉर्मली देखा जासी साइंस स्टूडेंट माने कॉलेज रो केनसी एक्टिविटी रे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट नै करन सेंटी के नीचे सुपीरियर भाषण पाठटा के मेन भाषण बट लाइफ रे पाठ जति दरकार साथ जति दरकार करिकुलर रे भी जति एक्टिव होबो एक्स्ट्रा करिकुलर रे जति एक्टिव होबो दरकार से साइंस स्टूडेंट हेतना सब से बेसी and he's a best debater also participate kariche inter university competition re amar lagi se dui thar se amar lagi मानिकेश्वरी यूनिवर्सिटी के गर्वित करिचे ते लगे ताके बहुत बहुत धन्यवाद आ तुमे जीवन में आहुरी एक्टिव को गोटे बहुत सफल नारी हेकिना फ्यूचर रे बाहर एति मो तुमके बेस्ट विशेष देछि Thank you. Our next achiever है नमिता साहू। नमिता साहू आरडीसी एनसीसी से भी जाइछन से रिसीव करबा लगी किंतु ताका फैमिली मेंबर होते अच्छा नहीं है से कोमते कहिथिले कि ताको फैमिली मेंबर आसीबे रिसीव करबा लगी ओके बोलते से माने भी नया से इट्स ओके नेक्स्ट हमर एनएसएस रो जड़े बाहर जाई कि हमर बहुत नाम परिचय से है लोपामुद्रा मिश्र से एनएसएस ने बहुत डेडिकेटेडली काम करिछन आ सिद्धरामजी सर शंकर का प्रपोज करिछन लोपामुद्रा मिश्र कांग्रेचुलेशन लोपामुद्रा नेक्स्ट हमारे स्पोर्ट्स चैंपियन स्पोर्ट्स में हम स्टूडेंट माने भी बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट करिकी ऐसे करिछन and from our department English department sports council रो ताकना सजेस्ट कराइछे मिस विनोदिनी धारुआ many congratulations विनोदिनी लोपामुद्रा आर्या अदिति and अमिता तबरे हमें असमा हमारे फैकल्टी अचीवर बनते तंकर कंट्रीब्यूशन लगी acknowledge their contribution over here. First and foremost, she is my favorite actually in the entire university, probably one of my favorite of course, Dr. Manikya Sahu. She is synonymous with hard work, diligence, smart activity, almost everything. Since the day I know her, I've seen her only working only. So, Dr. Manikya Sahu is a person to be called a phenomenal woman today, and we would want to acknowledge this. Madam, नमस्कार सर अति प्रिय स्टूडेंट मानकर मधुलिका मैडम मैडम जॉइन कला दिन तो तांके डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर दायित्व दिया हेचे आ दीर्घ 3 वर्ष रु अधिका हवा मैडम ई दायित्वटा निभि आसीचन she is always worried about our students safety security she is always interested for students skill training she is always interested that how our students will participate in different curricular and extracurricular activities आउ जेंता कि मैडम कहले बहुत जण भाषण मु चाकरी करछे 10 रु 5 मोर काम करवा टाइम है तार बाहर में काम नाही करे मोर खाली टीचिंग काम है मोर फैकल्टी है मोर काम खाली पाठ पढ़ाटा ई सब बेकार काम में नाही करे मोर काम अधिका हे जाउछ एटसेट्रा बट मैडम केबे ता माने नाही कोन जे मोर अधिका काम करू कि मोर ता माने किछि तांकर कंप्लेन नाही डेडिकेटेडली डे एंड नाइट ऑलवेज सी वांट्स द प्रोग्रेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी आउ मुइटा कहि दउ जे कि फर्स्ट हमें जेतले भावली कि हमें भावलो वुमेन्स डे कर्मा वाली फर्स्ट में भावली मधुलिका मैडम को गुटे अवार्ड तो जरूर दबा ही अछि आउ मैं जमु जेतले रजिस्टर सर जदे साम कहली मैं गुटे वुमेन्स डे कर्मा आ हमें किछि जन को दिके फेलिसिटेट कर्मा मुई भाबु जे मधुलिका मैडम को कले हवा एग्जैक्टली रजिस्टर सर कहले मुई सा दिके वुमेन एम्प्लॉयमेंट को दिके अवार्ड कर्मा जहा कले भी से माने अधिका काम करूचन घर काम संगे ये काम करूचन वेलफिल मधुलिका मैडम को करना सो यूनानिमसली माने मधुलिका मैडम को करना बोली ऑल द अथॉरिटीज टोल्ड ऐसे जन को करमारु आज हमें 19 जन को फेलिसिटेट करूछु सो थैंक यू सो मच मधुलिका मैडम फॉर ऑल योर डेडिकेशन फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर सो मच ऑफ लव केयर एंड अफेक्शन फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स Thank you so much, Manikya ma'am. I've seen it firsthand when I went to Kharagpur. She was coordinating between 4 different places. Students' participation place, her place, students' competition place, and then students' residential place. That was not a joke at all. She was running and doing all of these in Kharagpur University. So thank you so much, Manikya ma'am, and congratulations also.
Madam Vasunthara, please come. Thank you, ma'am, for felicitating with such a beautiful award. First of all, I wish every person in this room a happy International Women's Day. And I dedicate this award to all my students who have made me to reach this far. Thank you all my students. And I wish you all to reach spread the word of MMU, make MMU proud. Tame mani hi MMU. So, the journey from here till London to UK, US, I want to see all my students everywhere. So, once again, happy International Women's Day. Congratulations, Anna. Yes. Next, among the consistently liking the author, 200 episode of Odisha consistently welcome song Gaya Sijan. Our Tankana is Miss Lipsa Maharana. And because of her dedication and contribution to the progress of this university, we want to felicitate her also. Miss Lipsa Maharana. Amar Kalahandi University of Lata Mangeshkar. इतने सुंदर का कंठ जैसे ये पहला उत्कृष्ट प्रोग्राम सुनने को यार बाप रे हाँ mesmerizing voice. So thank you Lipsa. Continuously she has sang the introductory song in Uttishtata and I चाहूँ जो आम लता मंगेशकर आम पाखे सब बड़े रहू और बिहार वाला करे भी रहू. Lipsa Maharana madam को लगी please ताली की बजाइए समझते. You know, it's not a joke to be the head of the department of any department for that matter. And when a woman is the head of the department, just imagine the kind of work they have to do. I already Sumana madam के बाद तो तकरो काम थिला बोली felicitate करी छु आम पाखरे आउ जने head of the department option +2 exam रे एते गुडा काम करूछ plus so many work she is doing. So we have with us Dr. Palishri Patnaik, head of the department Odia. Palishri madam को विषय क्या कहबी समझते तो जाने this is one of the very strong, very vibrant women of our university. Our university रो कलाहांडी university रो first day रे उते self defense program होबार थिला तो बीसी सर मते कहितले ठीक टाइम रे पहुंची जीवु काली self defense program होबा. तो मुई आसली then that was my first day and इतने बढ़िया से ता माने स्पीच देले मुई पूरा खुश हो गेली कि जाओ इतने बढ़िया फैकल्टी इतने स्ट्रांग minded lady ता माने इनो अछन बोली that I can't believe and she has headed the department of Odia and जहाँ भी दायित्व कांटे देले सेटा बहुत seriously ता माने सेटा से करसन आउ she is a very good researcher, very good writer, very good orator. तो जाहो मां माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी एते बढ़िया जने ओडिया रो faculty ame paichu and she is the only lady who has done post doctorate. For your kind information dear guys. तो आमी भी तांके चाहबो से सब दिन इन रहू बोली आ बहुत धन्यवाद पलिश्री मैडम for all your talent, for all your dedication. से भी दिन ना देखसन की राती ना देखसन कि 10 रु 6 मोर काम बोली ना भावन any time she comes whatever work is done she is always there for the institute, she is always there for the students. Thank you madam. Thank you so much, ma'am. Congratulations, Palishri Patnaik ma'am. Yes. समस्त के almost कर दी टाइम पर लगी के एग्जाम में बतलाओ. मैडम आउटसाइड आगुते दिन सो मिसना आगुते दिन से डिसाइड करे कि काम टीचर माने एचओडी हबाटा तो ठीक कथा तापर सुपरिटेंडेंट मानकर कथा टिके भाबन फीमेल हॉस्टल रा काडा हालत होउ बा सेवन के एते जण के मैनेज करबेटा. So thank you. I am announcing my name first. Okay. So yes. Actually मैं जेबे नु गवर्नमेंट का ना प्राइवेट रे भी जेबे न थी की यूनिवर्सिटी रे बहुत डर लागसी हॉस्टल चार्जटा फाइल दे देबे बोली मोर पर्सनल फीलिंग्स में कहूचे घरे गुटे गुटे छुआ संभाळबाटा कष्ट आए मो तो पुआ आए जेन मानकर जियो भी आए मैं सुनी जे मोर भौणी मानकर जियो फैमिली नेबरहुड रे माने संभाळबाटा मुश्किल आए गुटे गुटे जियो थे किंतु मैडम माने हमर झरणा मैडम हमर सुमना मैडम माने ऑल मैडम से माने इतने सुंदर भाव रे 400 टा जियो के ने 200 टा जियो के सेवान को
रखिछन तांकर भल मंद सुख सुविधा सब बुझुछन एंड सबुथिरु बड़ जिंस होचे जे मेंटल टेंशन टा कि हॉस्टल छुआ माने ठीक अछन कि नहीं तो सेति लगी इट्स अ वेरी आई मीन रिस्की पोजीशन आ सब बेले समस्त जहा के भी हॉस्टल चार्ज दिया है जे इंस्टीट्यूट रे मैं काम करिचे वर्षे पर मोर हॉस्टल चार्ज नहीं जाओ कोई कि समस्त अथॉरिटी को निके आसन किंतु कंटीन्यूअसली मैडम माने 3 वर्ष 4 वर्ष हैला हॉस्टल रो चार्ज रे अछन आ बहुत बहुत धन्यवाद फॉर टेकिंग द मेंटल प्रेशर एंड द फिजिकल प्रेशर मेंटल प्रेशर इज मोर केते काना हे बोले से ही आंसर हे बोला सो थैंक यू सो मच मैडम हॉस्टल को गोटे फैमिली भरा देखिछंती आ से सब स्टूडेंट को ताको झियो भरा देखिछंती आ से ताको एते बढ़िया ट्रेनिंग देइछंती आई मस्ट कांग्रेचुलेट भरना मैडम आज जदि हम झियो माने के आगु को जाउछंती वुमेन्स हॉस्टल रो क्रेडिट गोस टू झरना मैडम फॉर ट्रेनिंग एंड सब कंपटीशन भी ताको एई भरा थाए कि दे विल लर्न समथिंग सो थैंक यू झरना मैडम this many women say taku felicitate kareba to bada katha ho kahar mane she has contributed a lot and se hostel ko possibly mate lage je there is something to learn from this hostel there is something the discipline she has maintained and the students I see them reaching so far khali Bhawanipatra no I see the hostel students are presenting in different forum and the credit goes to Jana madam for making them able. Thank you Jana madam. And of course she is one of my favorite too. Yes, we are each other favorites. Thank you. Next, our assistant superintendent madam आकर बिना किसी भी possible कोई hostel रे तो वो first announce करी उधर की hostel का assistant superintendent madam श्रीमती एडीश्री राव सब जिनस मैंने मत कहवा को पड़े कि बाप कर मोर समाधि मेटालिटी थाए कि सब जिनस एक्सेप्शनल हेल्पफुल पर्सन जड़े तो सेटा एक्नॉलेज करबा पाई हम फेलिसिटेट करबा नागाबली हॉस्टल हमर अछंती दु जण मिस रोजमेरी एकामा तांकर भी एनएसएस के बहुत कंट्रीब्यूशन अछि आउ से सब बेले सब जगह रे जेते बेले मैडम को कॉल कले से सब बेले अवेलेबल था कि बहुत साइलेंटली सब जिंस रे बहुत हेल्प करथि तो ताकू फेलिसिटेट भी करबा बहुत जरूरी है मोर इसलिए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद से जने साइलेंट वर्कर कथा कम काम बेसी Rosemary madam is just like I know the favorite of everyone, just like Rose. Madam NSS रो officer, madam home science रो HOD, madam Nagabali hostel रो assistant superintendent. So she is having 3 positions at a time at a very very young age, very beginning of her career. So thank you so much madam for your dedication. Dr. Gitanjali Rao madam से भी assistant superintendent अछंती नागाबली हॉस्टल तो वो रिक्वेस्ट करबी गोमाया मैडम को गीतांजलि मैडम को रिसीव करबा पाए Arya Naik all round achievement for UG is already here. So I request the volunteer to bring the badge and other things to felicitate Arya Naik. She has contributed immensely for the progress of this university. The presented MMU. She also went for the Central University competition and just a minute competition. And participated in UN conference in New Delhi, participated in other forum also, a fantastic debater in English, and in many other ways she has contributed to the development of this university. Big round of applause for Arya Naik. All round of achiever under that. Congratulations. Congratulations, Arya. Now, madam के रही रखू आपके हमारे स्पेशल एक सब जिनसो जहाँ
हाँ 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 ए रहो जाई परबनी मु जानी जे मोर झियो मान को भूख लागे थिला ना आमे टिके टाइम वेहे पळै गलु ना किंतु मते लागे जे एका ही गुटे दिन आमे जे मैडम माने अधिका काम करू छ तांके के उत्साहित करा लागे 5 मिनिट्स 5 to 10 minutes राइट ठीक है एबे नेक्स्ट डाक्टर मैडम नेक्स्ट हमर अछंती सागरिका मैडम प्लीज अछंती सागरिका मैडम नेक्स्ट सेक्शन रे अछंती प्लस हॉस्पिटल रे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है कि बहुत तरह कंट्रीब्यूशन अछि तो सेति में अनुरोध करबी वॉलंटियर मानू सेति निगरानी के आसीबा मैडम आप सर्टिफिकेट सिग्नेचर करेगी अपन को सेटा दे देबो मैडम को सिग्नेचर हैगी आवा पाखरे आउ जने एक्सेप्शनल गेस्ट फैकल्टी हिसाब रे अछती श्रावणी मैडम शी हैज बीन हेल्पिंग अस and almost helping in every activities all departments समस्त पर duty करना है एग्जाम में करना है श्रावणी मैडम is there so she has been doing a lot of work about which many of us don't know so श्रावणी मैडम को फेलिसिटेट करबा पर अनुरोध सभी किछ करबा पाई चाहछंती श्रावणी मैडम इन द मीन टाइम माने जो जगह देखो निहाती भाव में प्रेजेंट थिले एवं तांको द्वारा जहाँ हम से निहाती भाव में कंट्रीब्यूट करेंगे आमर जदि नेशनल सेमिनार होउची सी रहउचंती तांको डिपार्टमेंट रो भी माने मु तो देखे जे से जते संश्लिष्ट रहंती तांको डिपार्टमेंटल अफेयर रे एक्चुअली मते बहुत खुशी लागे एमिति यदि समस्ते हेबे निहाती भाव में आम यूनिवर्सिटी माने पाई स्काई इज द लिमिट थैंक यू सो मच श्रावणी मैम अब ये सब इट्स पॉसिबल बिल्कुल भी है ना सकता जदी अपन लीडरशिप सेल्फी न करते आज वेडनेसडे आवे सेलिब्रेट करि पारि न करते तो सेठी पर मो डेप्यूटी रजिस्ट्रार सर आ सब ऑर्गेनाइजर मैडम मधुलिका मैडम समस्त को एके आसीबा पाई कहिबी ओटे छोटिया टोकन ऑफ लव हमर साइड टू अच्छी दिस इज जस्ट मैडम भाई थैंक यू सो मच मैडम फॉर एवरीथिंग मते किछि ऑलरेडी हेई साइड एटा आम साइड ऑर्गेनाइजिंग श्रावणी मैडम हमर डीसी रो गेस्ट फैकल्टी मैडम ताके जेते बेले डाकले से प्रेजेंट हेबे जेन काम दिया जाय छै सेमिनार अछि कल्चरल फंक्शन मैनेज करबे आउ काना इवेंट लेक्चर अछि मैनेज करबे उत्कृष्टता अछि करबे सो व्हाट एवर वर्क टाइम जेते दिया है से नाइ भाबन कि जे मोर तो खाली क्लास में भी पढ़ाबे मते एक्स्ट्रा काम दिया हो जे एबे ऑब्जेक्शन काम नाइ न सो थैंक यू सो मच मैडम आई विश यू अ ब्राइट फ्यूचर इन फ्यूचर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को लिस्ट मधुलिका मैडम 1 नंबर जन्मे रु बड़ी बड़ी 20 जन करला एंड आउ किछि जन मैडम माने रही गले आमे तांको इन फ्यूचर कि नेक्स्ट ईयर रे करमु दिस इज जस्ट ए स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन लव फॉर द एक्स्ट्रा टाइम कि मैडम माने जन माने देचन फॉर द एक्स्ट्रा डेडिकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी से माने यूनिवर्सिटी के तांकर परिवार बोली भाबिचन ऑल द वार्डन्स ऑल द फैकल्टीज ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम रानी टू भाग्यवती नानी से माने केबे नाइ भाबी आमे इन चाकरी करूछु बोली चाकरी करूछु भाबितले 10 रु 6 काम करिथिसे एक्स्ट्रा काम नाइ करिथिसे से माने यूनिवर्सिटी रे तांकर परिवार बोली भाबिचन तांकर समय आ स्वेद आ श्रम देचन सेति लागि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जणाउते आमे आशा करूचे इन फ्यूचर से माने एंता ही काम करबे आ तांकु देखि कि ना आ किछि जण भी मोटिवेटेड हे कि ना यूनिवर्सिटी लागि डेडिकेटेडली काम करबे थैंक यू एवरीवन हु हैज बीन फेलिसिटेटेड हियर समस्त को अनुरोध करके स्टैंडिंग ओवेशन दबा हमारा ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम को आमे आम तरफ हृदय अति निपुणता पंडर रु आपण को मैडम एही एटा आपण देखन कोन देइछु सरप्राइज गिफ्ट निश्चित भाबरे किंतु एहा हम मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय रो हृदय रु आपण को
ए स्नेह एवं सम्मान आपन को परी जने नारी थिबारु आज विश्वविद्यालय गर्वित अनुभव करिछि। बहुत भाभी की एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट देखी करी ये ट्राइबल रो कोते अना है शर्मा मैडम कहले हमें मैडम को एमपी दबा जोटा मैडम पर प्रिय जिंस है मैडम को कहीं किसी कहे चाहूँ मुझे तो मैं डे 1 आसिली मैडम आई मीन मु आको जॉइन करथि तापर मैडम जॉइन करथिले तो मैडम जते मैं फर्स्ट आसिले से टिके डरू के थिले कि किमती जगह हेतो कोन हेतो सो शी टुक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी कि जगह किमती कोन होगा बट आज हमें दुई जन टुडे स्टेज में पहुंची छु माने she don't just see this university as a place of work, it's a temple for her. So जब मैं enter करती तो सब लोग मुंडिया करके विजिट को पसंद थी. So madam has a vision for this university and every time we discuss कि हमें कितने आगे को किसी करीबा किसी यूनिवर्सिटी में करीबा किसी पिला को करीबा. So her dedication, her time and her contribution is commendable. से दिन राति ताको एयर थाए जे से कोन कले यूनिवर्सिटी आगु को जीवो कोन कले हमर यूनिवर्सिटी स्टाफ माने भी दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स so she just not just see as a faculty of anthropology but she see the university as a work कि किंती प्रोग्रेस करिवो so the whole idea ताको खाली गोटे विजन था किंती प्रोग्रेस करिवा so she is not working day and day night कि किमिति आगु को हमें समस्त बढ़िवा खाली एकुटिया नहीं हमें समस्त एज अ टीम बढ़िवा सो ह्यूज कांग्रेचुलेशन मैडम फॉर गोटे हम यूनिवर्सिटी को गोटे लेवल पर्यंत आनिबा पाई and day 1 you have been contributing and seeing your effort from every small thing you have been putting खाली स्टूडेंट मानकर to नहीं कि स्टाफ मानकर नहीं कि फैकल्टीज मानकर नहीं कि every small things is looking into it. Thank you, ma'am. Your contribution is noteworthy, and we definitely look forward to your suggestions, your contribution in every small thing that we do. Thank you, ma'am. अच्छा हम पछे नमिता साहू को से अन्य पटे जाइते प्राइज रिसीव करबा पई ताको मा एथि की अछती तो हम ताको रिसीव करबा नमिता साहू जी राजकोट से एकेडमी को रिप्रेजेंट करी की पब्लिक डे पैरेड में पार्टिसिपेट करथिले हम आरटीसी जेएससी रो सो वेरी कांग्रेचुलेशन ताको मा की बहुत कांग्रेचुलेशन एथि हम पटे जॉइन करबा पई समस्त को कहबी और के ताली बजेकी हमको सल्यूट करेंगे से वर्तमान अन्य जगह रिसीव करछन दिस प्राइज नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस चांसलर इन चार्ज मैम निवेदिता नाथ टू से few words and after that we'll just have few cultural program and wind up the meeting over to you. बेसी टाइम नाइन निये 2 मिनिट कहमी समस्त को मोर सभी झियो मान को अंतर्जातीय महिला दिवस रो शुभेच्छा आउ दुईटा जिनसा कहबी झियो माने मेंटली केबे भी वीक नाइ हबो सब बेले मेंटली स्ट्रांग हबो एंड निज गोड़ रे निजे ठिया हबा लागि चेष्टा करबो शिक्षा आउ अर्थनैतिक स्वाधीनता ई दुईटा जिंस जदि तमे जीवन रे हासिल करि पारलो देन यू कैन बी ए सक्सेसफुल वुमेन देन यू कैन बी ए एम्पावर्ड वुमेन जेन चेष्टा करबो निज गोड़ रे ठिया हबा लागि चेष्टा करबो सब बेले मेंटली स्ट्रांग होगा लागि चाहे दुनिया उल्टी जाओ बट केबे भी मोरली निज के लो फील नहीं करबो केबे भी कोनोसी गलत स्टेप नहीं नबो बिकॉज़ मेंटल हेल्थ इज मोर इंपोर्टेंट देन आवर फिजिकल हेल्थ एंड जेते बेले भी नारी मानकर प्रति कोनोसी प्रकार अन्याय होबाटा तमे देखुथबो किंबा तमे निजे अनुभव करबो सेते बेले तमे स्वर उत्तोलन करबो ताहले जाई किना नारी रो अवस्था सुधरीबा ताहले जाई किना नारी मानकर विकास हे करबा आ संपूर्ण सशक्तिकरण नारी रो हे करबा बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को
भूख लगुचे तथापि बसिच थैंक यू सो मच माय डियर गर्ल्स एंता ही मुई वुमेन्स कॉलेज रे पढुतली आ एंता ही मैडम मान को प्राइज नवाटा देखि कि ना मोर बापा को इच्छा थिला वे प्रोफेसर होबार किंतु मुई चिंता करे मुई लेक्चरर हेबी एंता ही इंस्पायर हेबी तो मुई चाहू छे तमे माने भी सेंता इंस्पायर हो आ मुझके गुटे गुटे सफल नारी भाबरे निजे को प्रतिष्ठित करा आई विश ऑल द बेस्ट टू यू आई लव यू ऑल विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू और समस्त ये जमा करके होची मुझे जिलागत कल्चरल प्रोग्राम में नहीं पारे ना और इसके पूरा जगह की यात्रा परिवार अछि तो संजय भाई अरे ये वीडियो कंटिन्यू करियो वीडियो कंटिन्यू शेयर I can see you. Okay. All the best, artists. All the best. Okay. Thank you. Thank you, sir and ma'am. Okay, I welcome you all to our little cultural fest on International Women's Day. You know, it's not just about the music and dance. It's about celebrating where we come from, the story, our family telling, and the tradition that make us unique. So please welcome Mahi for the performance on iconic Nandani classical dance. Students, please maintain silence. Only 2 minutes. Students, I request all of you to maintain silence, please. Please be seated. Please be seated. It's a matter of 15 minutes only, so please be seated. अरे लास्ट डे कितने थिना है जो कितने 10-15 मिनट रे तुमने जाई परबो तो रिक्वेस्ट करबी समस्त के टिके साइलेंस मेंटेन करो दुईटा ना प्रोग्राम अछि हमर गुटे आईगेरी नंदिनी डांस रा अपन पर गुटे स्किट रा अछि जेमे एम्पावरमेंट होते तो just another 15 minutes and then after that you can go. Sorry madam एते समय धैर्य धरला परे टिके नाच गाना हो हबो कि नहीं ताहाले आ केमती जे सब उठिकी पळे जाउछ एबे जदी छी ननी आरंभ करी देबी देखो जने छी कहि सारिलनी आज हमर ए विशिष्ट दिवस रे हमें आज आ छी छा कहा को करबा नाही हमें समस्त को जे तू भला पाउचे भला पाइबा हमर मर्यादा एवं शास्त्रीयता को निश्चित भाव में हमें सम्मान देबा आउ मात्र किछि समय दिन ठान के बैठिए जनाब देखो शुरू हो गया Please welcome Mahi for the performance on Aigani Nandani classical dance. भगवती
कविता तो बनती है आप लोगों के लिए। गौर फरमाइए। तुम हो शक्ति, तुम हो उम्मीद, तुम हो शक्ति, तुम हो उम्मीद, तुम हो प्रेरणा, तुम हो प्रकाश। हर संघर्ष में छुपा है तुम्हारा हौसला। तुमसे ही तो मंजिल मिलती है, तुमसे ही तो हर मंजिल मिलती है। तुमने ना केवल अपनी दुनिया बनाई, बल्कि दिल में एक नई आशा जलाई, दिल में एक नई आशा जलाई। इन सब शब्दों से प्रेरित हो चलिए देखते हैं आज के रोमांचक नाटक हमारे उदंती गर्ल्स हॉस्टल छात्राओं द्वारा। आओ सोहिबा नाही। प्लीज वेलकम। पथर ढुकताण सजसी फाड़ीर परी सुभ्रतार मान। शुभ मध्याह्न। आज विशिष्ट दिवस उड़ंतीर किछि छात्री माने एठी आसी एक नाटक प्रदर्शन करेंगे जहाँकि एक सप्ताह विशिष्ट। तो चलतु देखा जहाँ शीर्षक हूँ आउ सही चलो आरंभ। भगवान मते गोटे पुओ दे दियो, भगवान गोटे पुओ दे दियो। मो वंश रखबार अछि भगवान, मो कुल दीप रक्षा करबार अछि। मो 108 नड़िया बाड़े भगवान, मते गोटे पुओ दे दियो भगवान। संगे थे कमिटी आपनकर झियाटी झिया मारी दे ताको, फोपाड़ दे ताको। हे प्रभु मो कोन कोन ताको कहतरी कोणी मते झिया मो गां लोक गारे केमिति मुह देखै बाटा चलबी मो जानि परबी ता। इति लज्जा लोक कोन अछि को हेना छोटा मुथिर अंतर कोन आ झियोटा गुते लक्ष्मी स्वरूप। लक्ष्मी लक्ष्मी नुआ ये सानी सानी हम घर ऊपर ग्रह पड़ी। अरे ये तो जन्म हलानी तापर पढ़ा खर्च, पैड खर्च, बाहर खर्च, यौतुक खर्च कोण आनी ऋण केमती सुझिबी। अरे मुझे जानी था ये झील जन्म नब बोली मोर प्रथम व्यवस्था कर देथांती, गर्भरू मार देथांती, मारी देथांत। आ केते मारिबो, आ केते फुमा नष्ट करिवो तमे। खली तो मारी थाइछो, तुमको तो मो पुओ मिली गला, पुओ पाइले त तमरो। आ केते पाप कहिबो निके करतो करे तमे। आ केते पाप कहिबो ता पढ़ा खर्चा लेखा बोली सब को कुछ रख तो झियो को तू आ तो झियो दिन मिसी की रहो। आज ठारो मो पाई तमे दि जण मरी गलो। कड़ को छिंडे नहीं फूलर आशा करू कि कड़ को छिंडे नहीं फूलर आशा करू कि झील संतान को मारी दे बहुर आशा करू कि परवर्ती पर्याय आम देखा किपरि गोटे झील जिते बड़े बड़ हुए ता निज परिवार में से केमी अंतर विभेदर सम्मुखीन हुए। चलो आसतु देखा। अरे पुड़ा मैं कम पड़ी कौन सब बेले सब भीतर पसी रहिछु एठी क्या मो गोड़े मोड़े जाऊ जे जमा बाहागर पर एमती तो स्वामी को सेवा करबो बुझिलु। पूर्व जो परंपरा चली आछि ताको बजाय रख। तो जेजेमा जहा कहउछंती ताको ही मानि की चल। अरे कुआड़े पली जाऊँ तोते कोई सब दिन मन पकाई पड़ो पैसा दे के जा। कौन बहु सासु सहित जुक्ति तर्क करूचु तोते पैसा दे के जीवो बोली कुआई दिला परा। आणे पैसा दे ए बाबा हे कर जा। नारीर प्रथम कर्तव्य होची से स्वामी सेवा करबा बुझिलु। कौन होला कौन करिबु पैसा पाठ पढ़ले तो कौन करिबु
घर संसार करबू पाठ पढ़ी कौन करबू भाई को तो ना पैसा नहीं देना कौन कहलु तू कौन कहलु से पुओ तू झियो की पाठ पढ़ले तू कौन करबू जा घर काम कर एटी छिड़ाई की कौन करछु जा भाई को मजा करने में पैसा दे देले हेले मते पढ़िया में पैसा देले हम जानि छी तो जीव पर जीव तो पैसा देबी बोली सिथि के देनी हम संजय करके रखी सतरे मां हां मां से हम तो दउची सेटा भी तो पढ़ी पारी व्यवहार करबो ना हम मां केते भलो कन्या को शिक्षा प्राप्ति करैबा आम काम कन्या को शिक्षा प्राप्ति करैबा आम काम तेबे सिना से जगत रे करिवे सुनाम अर्जन तो परवर्ती पर्याय आम देखा जिते बेले झील पिला माने निज कॉलेज चला पाठरे बाटरे केमती गरीर दुष्कर्मी को सामना कर चलो देख कॉलेज रे ना कौन मो ना मीना सुमी ये तो छोटे बड़े कॉलेज आसछंती ना ना ये तो हम पड़ोसी घरर झील से मते सब कॉलेज को आसे तुम को क्लास में पढुछ दीदी को पाठ ये बाहावर हां दीदी हम समय नहीं को एमती रीति नीति चाली आछे मां भी छोट बड़े लेटा तो पाप नियम बाहर जिंस एटा किंतु दीदी एटा तो हम प्रथा परंपरा चाली आछे एभली समाज को कहवा आम शिक्षित एमान जोगु झील पिला मैंने सब सदाबर्तरी लक्ष्यस्थली हुए कहीं ये सब प्रश्न आपण मान बोध हुए ये प्रश्नर उत्तर झरका अनी बस तार उत्तर छाड़ियापी तो परवर्ती पर्यायर आम देखा जिते बड़े गोटे झील एकांतर भाव में निज सांग को अपेक्षा करें गोटे शोचनीय परिस्थितिर सामना करने पड़े चलो देखा एते टाइम हो गलानी कॉलेज आसीनी एमाने पुणी पड़े आसले मत आज एम किसी गोटे ठीक जवाब दवा पड़ो जब आज मु चुप रही ताले आउ को झील को आउ सामना करने पड़ो एमती कौन होती तुम्हारे माँ बोली ना कि तुम्हारे माँ बोली ना बहुत गर्व अच्छी ना गर्व को भांगी दे चरम सीमा बोधे यही पर्यायर आपने अनुभव करते एपरी निर्यातनार सब बेले गोटे झील ही दायी क्यों कहीं सर्वदा एमती क्यों कार्यर कहीं शिकारी होउछि बोधे प्रश्न एबे भी झरका चाही बसी उत्तर परवर्ती पर्यायर आम देखा किपरि मीनार आग जीवन किभली आसुछि
ଭଲ ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଥିଲ ମୁଁ ବାହାଘର ଏଇଠି ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣେଇବ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ମିନା ଦିଦି ମିନାର ତ ଏସି ଡାକ୍ତର ହେଇଯାଇଥିଲା କ'ଣ ହଁ ଦିଦି କେବେ କେମିତି ସେ ଦିଟା ପୁଅ ହିଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ କେବେ କଲେ ଏମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ତାକୁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ ସତ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କି ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ମିନାର ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲି ମିନା ମିନା କେମିତି ଅଛ ଅଙ୍କଲ ଏବେ ତାର ତ ଏସି ଡାକ୍ତର ହେଇଥିଲା ସେ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ନେଇଛି ଏମିତି କହନ୍ତୁନି ଅଙ୍କଲ ହଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ନେଇଛି ସେ ଆଉ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ପୁଲିସକୁ କହିଲେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ହରେଇବା ଦୁଃଖ ତ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଗାଁର ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି ଅପମାନ କ'ଣ ଅଙ୍କଲ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପମାନ କ'ଣ ଏଥିରେ ହଁ ମୁଁ ସେ ଅପମାନ ହିଁ ସହିପାରିବିନି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଏମିତି କହନ୍ତୁନି ଆପଣ ଯଦି କିଛି କରିବେନି କିଏ କରିବ ଆଉ ତୁ ବାସ୍ କର ତୁ ଯଦି ସେଇଦିନ ଯଦି ସେମିତି କରିନଥାନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ତୋ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି ତୁ ମୋତେ ଆଉ କଦାପି ଫୋନ୍ କରିବୁନି ତୁ ଫୋନ୍ ରଖ ହ୍ୟାଲୋ ଅଙ୍କଲ ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି କ'ଣ ହେଲା କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି ମିନା ମିନା ଆଉ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା ମିନା ଆଉ ନାହିଁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଦିଦି ମିନା ଆମ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ତାପରେ ସେ ସୁସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ତ ଆମେ କିଛି ପୁଲିସକୁ କହିବିନି ଯଦି ଆମେ ଚାଲ କହିଦେବା ସବୁ ନା ଚାଲ ଆମେ ସବୁ କହିଦେବା ଚାଲ ଯାଇପାରିବି ତୁ ବାହାଘର ଏମିତି କ'ଣ ନା ବାହାଘର ଠିକ୍ ତାକୁ ନିଆ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ ନା କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ନା କ୍ଷମା କରିବି ତୁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋତେ ହିଁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ହିଁ ମିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଏକଲା ସବୁ କରିବି ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଦେବି ବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ गोटे नारीर दुख बोध हुए गोटे नारी ही बुझीपारे से चली तो जाए पुलिस से कंप्लेन करने किंतु प्रश्न आपण मान कौन मीना को न्याय मिल जाना परवर्ती पर्याय देखा बाध्य न्याय देवी जहाँ किसी करने पड़ो मुझे भी पुलिस करती तो बापा न गले भी बाध्य मुझे न्याय देती जहाँ भी करी एकला कथा कहली बाध्य मुझे न्याय देवी जे मो सांग देले दिंतु ना मुझे न्याय देवी से दुईटा पुआ को मुझे छाड़ी ना जहाँ भी करी जहाँ भी करी बाध्य करी अन्याय शिकारी को जिते न्याय देवाई आईन हत्या उठा जाए से समाज पशुतुल्य मनीष मैंने से हाथ को ही काटि दिया निज सांग को न्याय देवाई जाए निज ही प्राण हरईदेला एवं परवर्ती पर्यायर आम देखा किभली गोटे विवाहित नारी यौतुकर समस्या गुड़िक सामना करे चल देखिए चुपचाप
बोधे आमर ये सहीबाटा ही कुकर्मर निया को घीओ देइछि। भगवान समस्त को गोटे माठे गढ़ुचंती। पुओ और झील मध्य अंतर किपरि जदि भगवान से मध्य अंतर देखु ना ताले आमे आ समाज के हाँ हाँ आउ सहिबु ना ए दुष्कर्मी मानक जंत्रणा आउ सहिबु ना हमर भूल कण आमे झियो जन्म नेइछु एही नारी माँ सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी आउ जरूरी पड़े माँ काली रूप नहीं पारे एही नारी जननी भगिनी एवं संहारहारी नहीं पारे। I request everyone to give big round of applause for the dance of Adati herself because the preparation seemed ever nice, ever single life, but we all give it over nice. So yes, thank you. कौन थिला से निर्भयार दोष बस से जीवा या काहा ऊपर भरोसा करिबा कौन थिला से आसिफार दोष 8 वर्षीय शरीर ना झियो रूपरे जन्म हेबा कौन थिला से ममितार दोष डॉक्टर हुई रोगीर सेवा करिबा या राति रे सेवा करिबा आउ नुहे निर्यातनार थकार कसित मासक ठारू स्टार्ट हो जाइतिला किंतु आउ नुहे एबे आमे निर्यातना काल को एंड करिया को पड़िबो या को अंत करिया को पड़िबो आमे समस्त मिसी के अंत करिबो आउ सही Excellent, wonderful, no word, बहुत बढ़िया गोटे छोट स्पीच रे से माने देखैले केमती गर्ल चाइल्ड को इम्पोर्टेंस रे होची केमती डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम होची केमती ता माने पुओ माने इफ टीजिंग करूछथि झियो मानकर केमती गर्ल्स एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाउनी एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू रेज वॉइस अगेंस्ट ऑल सच काइंड ऑफ वायलेंस। बहुत बढ़िया मैडम एमान को हमें सर्टिफिकेट दबा डाकी ऑफिस को बहुत सुंदर झील मैंने बहुत भोक लगे कि वर्ष को गोटे दिन मुझे भाविली टे वुमेन्स डे को आम सेलिब्रेट करवा आ गोटे जिन बहुत प्रतिभा अच्छी तुम भितर मोबाइल व्हाट्सअप फेसबुक रे समय नष्ट करनी एमती सब जिन डेभलप कर निजक डेभलप कर निजर गोटे आइडेंटिटी सृष्टि कर गोटे एम्पावर्ड वुमेन हुआ गोटे रोल मॉडल हुआ। थैंक यू एवरीवन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्षमा मागुची मो डेरी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डाकिले से प्रोग्राम मु मना कर पार्ली आ समस्त मु झील मान क्षमा मागुची मो डेरी है। थैंक यू सो मच मैम। ये ड्रामाटा फास्ट कहबी आईगिरी नंदिनी बहुत ही एक्सेलेंट थिला लाइक गुस्बम्स आसीगला आमे ये जो कल्चरल प्रोग्राम रो प्राइज गुड़ा आम एनुअल फंक्शन दिन ही दबू बट सी वो आखिरे लुआ चली आसला ए जो ड्रामा रो थीम थिला आ पिला माने इतने सुंदर कले बिकॉज ऑल द वुमेन ऑल द गर्ल्स आमे एही फेस दे के जाइछु तेनो आउ सहीबा नाही मु पूरा टीम को आम माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी आउ जो लाइक मु जानी मत शीघ्र कांद के लगे बट कांद लगिला बिकॉज आम जदि वॉइसलेस को पाई का आम सुर दे पारे जो माने यौतुक शिकार होती जो मैंने इफ टीचिंग होती जदि आम सुर दे पारे मे भी आज दिन सक्सेसफुल हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे रे मो उदंती हॉस्टेल ए झियो मानकु जो माने हम आखिरे लुह भरी देबा सहित हृदय रे गला देई देले आउ सहीबा नाही से मानकु बहुत बहुत धन्यवाद जणाउची आउ एठी गोटे सरप्राइजिंग थिला इवेंटा एक्सपेक्ट कर नथिलु कि गोटे दिन रे एते सुंदर करि परिबे आउ थरे माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय तरफ धन्यवाद जणेबा पाई ऑफिशियल धन्यवाद जणेबा पाई अनुरोध करी एका मैडम को वोट ऑफ थैंक्स देबा पाई दया करी मते के छाड़ंतु नाही फोटो रे मु भी रही बाबू चाहूची
celebrating the faith, breaking the barrier, changing the sky with the courage and love shared air to fly. Let's honor her power, her voice, her way, celebrating her on International Women's Day. Good afternoon,